Hello everyone, it's a first class of CPC and this would be an introductory class in which I will introduce this amazing subject to all of you, which is called as Code of Civil Procedure 1908. It is 5 of 1908, abbreviated as CPC. CPC is considered to be a tough subject, but trust me, it's not a tough subject. It's a long subject, it's a big subject, it's a giant subject. And there's a way of reading and understanding CPC. You just need to know that how to interlink its various sections with the orders and the rules given into them. CPC को एक टफ एक पेचीदा सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन यकीन करें आप, CPC एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, एक पेचीदा सब्जेक्ट नहीं है. ये एक बड़ा सब्जेक्ट है. इट्स अ लॉन्ग सब्जेक्ट, इट्स अ बिग सब्जेक्ट. और इसको पढ़ने का और समझने का एक तरीका है. आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि इसके जो सेक्शंस दिए हुए हैं, जो वेरियस सेक्शंस हैं CPC के, उनको किस तरीके से हमने ऑर्डर्स के साथ और उस ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स हैं उनके साथ किस तरीके से इनको इंटरलिंक करना है और किस तरीके से हर एक वर्ड को इंटरप्रेट करना है. द डे यू अंडरस्टैंड दिस वे और दिस मेथड, यू विल बी इन अ पोजिशन टू से दैट यस, CPC is quite a simple subject. So with this note, let's start today's class. Okay, so first of all, let's see the importance of CPC for the judicial service exams. CPC की क्या अहमियत है जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए. फॉर मेंस एंड इंटरव्यू CPC हैज अ ह्यूज वेटेज irrespective of the state that you are going to appear for. मेंस और इंटरव्यू के लिए CPC की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है CPC. CPC इज अ सब्जेक्ट दैट यू कैन नॉट अवॉइड और यू कैन नॉट टेक लाइटली. आप हल्के में नहीं ले सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते CPC को, चाहे आप किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. But before mains and interview, there is a hard nut to crack. There is a speed breaker, prelims. Prelims ही अगर आपने नहीं क्लियर किया तो मेंस और इंटरव्यू में आप कैसे पहुंचेंगे. So let's see that what is the importance of CPC for prelims. We'll take example of some major states and उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि CPC की क्या अहमियत है, right? So first of all, I'll take an example of Delhi Judicial Services, DJS. DJS. Now, DJS, the paper is comprised of 200 questions. 200 questions, and you will get 2 hours 30 minutes to complete this exam. 200 questions आते हैं DJS में, Delhi Judicial Services में, और 200 questions को करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है. Out of these 200 questions, 30 to 35 questions will be from CPC most of the time. 30 से 35 questions, and some of the times more than 35 questions you will find in DJS from CPC. 200 में से 30 से 35 questions most of the times आते ही हैं CPC के DJS में, दिल्ली जुडिशियल सर्विस में, और कई बार तो इससे भी ज्यादा आ जाते हैं, 40 के आसपास क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं. इफ यू विल टॉक अबाउट हरियाणा, सो हरियाणा, इफ यू विल टॉक अबाउट हरियाणा, सो देयर आर 125 क्वेश्चंस टोटल. 125 क्वेश्चंस. हरियाणा पेपर इज कंप्राइज्ड ऑफ 125 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट 2 hours टू कंप्लीट दिस पेपर. 2 घंटे आपको मिलेंगे. 125 क्वेश्चंस होते हैं. एंड आउट ऑफ दीज 125 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स CPC के होते हैं. 10 से 15 क्वेश्चंस. सेम पैटर्न, द सेम स्कीम इज फॉलोड बाय पंजाब एज वेल. पंजाब भी सेम स्कीम फॉलो करता है. दे वुड बी 125 क्वेश्चंस टोटल. And out of these 125 questions, 10 to 15 questions would be from CPC only, right? And if UP, Uttar Pradesh is a state that you are keeping an eye on, or you are looking for, UP, Uttar Pradesh is your state preference, then in UP, prelims has been bifurcated in 2 parts, paper 1 and paper 2, UP. It has been classified in 2 parts, paper 1 and paper 2. 150 questions
150 questions in both. Paper 1 is of GK, general knowledge, GK and GS, general studies. And paper 2 is of law. Paper 2 is of law, 150 questions. Out of these 150 questions of law, there would be 10 to 15 questions most of the times from CPC. अगर यूपी आपका स्टेट प्रेफरेंस है तो यूपी में प्रीलिम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 में. दोनों में 150 क्वेश्चंस आते हैं. 150 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन बोथ दिस पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज ऑफ जीके एंड पेपर 2 इज ऑफ लॉ. Out of these 150 questions of law, 10 to 15 questions most of the times CPC के होते हैं, right? If Rajasthan is your state preference, if Rajasthan is your state preference, so the paper is comprised of 100 questions and you will get 2 hours to complete the paper. 100 questions होते हैं total. और 2 घंटे आपको मिलते हैं एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, पेपर कंप्लीट करने के लिए. आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चंस 5 to 8 क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द टाइम्स 10 क्वेश्चंस सीपीसी के होते हैं, राइट? सो एज आई टोल्ड यू दैट फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स, सीपीसी इज अ सब्जेक्ट यू कैनॉट अवॉइड, यू कैनॉट टेक इट लाइटली. इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं. सीपीसी हैज़ अ ह्यूज वेटेज, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. जैसे मैंने बताया डीजीएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 30 to 35 क्वेश्चंस सीपीसी के होते हैं. हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, ये मेजर स्टेट्स के मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टेट्स में सीपीसी नहीं आता है. बाकी स्टेट्स में भी सीपीसी आता है और उसकी सेम वेटेज होती है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई टुक द एग्जांपल ऑफ these 5 मेजर स्टेट्स, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी. हाउ डिड सीपीसी इमर्ज? सीपीसी कैसे इमर्ज हुआ? सीपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? एक बार उसको भी समझ लेते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी. Historical background of CPC. Before 1859, there was no uniform civil procedure code. There were different systems of civil procedure in different parts of the country, but a uniform civil procedure code was nowhere in the picture before 1859. So the very first time in 1859, a uniform civil procedure code was enacted. 1859 से पहले कोई भी यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था. डिफरेंट सिविल प्रोसीजर कोड्स जो है वो कंट्री में थे, हमारे डिफरेंट पार्ट्स में. डिफरेंट सिविल प्रोसीजर्स वर प्रिवेलेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट अ यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड वाज नोवेयर इन द पिक्चर. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1859, a uniform civil procedure code, a uniform civil procedure code was enacted. 1859 में सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड वाज इनेक्टेड. सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड आता है 1859 में. These dates are very important for prelims. Very frequently, many states ask these dates. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से क्या इंपॉर्टेंट है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से इंपॉर्टेंट है डेट्स. बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि कब यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड आया, कब सीपीसी आया, कब उसको एसेंट मिला, एंड ऑल दीज डेट्स. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1859 a uniform civil procedure code was enacted, but it was not made applicable to the Supreme Courts of the Presidency towns and to the Presidency small causes courts. And there were many defects and loopholes in this code. 1859 में यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड तो बना दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट्स थे प्रेसिडेंसी टाउन्स के
और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स जो थे और बाकी भी कुछ कोर्ट्स थे, उस पे इसको अप्लाई नहीं किया। एंड देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन लूप होल्स इन दिस कोड। बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स थे इसमें। सो दैट इज व्हाई इट वाज री-इनेक्टेड twice, first in 1877 and in 1882 subsequently। 1877 और 1882 में दोबारा से बनाने की नौबत आ गई यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि जो 1859 का सीपीसी था, यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड था, उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसको बहुत सारे कोर्ट्स पे भी अप्लाई नहीं किया गया था। So it was reenacted twice, first in 1877 and subsequently in 1882. The present Code of Civil Procedure was enacted in 1908. Present Code of Civil Procedure 1908. Now, this 1908 Code of Civil Procedure, now if you can see that 1908, so it is a pre-constitutional act. It is a pre-constitutional code. 1908 में इसको बनाया गया है। आजादी से पहले का कोड है, आजादी से पहले का कानून है। So all the acts or the laws which have been enacted before the independence are prevalent, are still prevalent because of Article 372. Article 372 of the Constitution of India. Article 372 इनको Article 372 of the Constitution of India provides life to all the laws and the acts and the codes which have been enacted before the independence of India. ये इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, right? So the present Code of Civil Procedure was enacted in 1908 and some minor amendments were made into this after independence. First in 1951 and then in 1956. Minor amendments were made into this. कुछ छोटे मोटे amendments इसमें करे गए इंडिपेंडेंस के बाद 51 में और 1956 में, 1951 and 1956. But the Law Commission of India in its 27th report, in its 40th report and its 54th report and 55th report gave recommendations for a major change in the CPC, for a structural change in CPC. And as a result in 1976, a structural change was brought into the CPC by an Amendment Act of 1976. 27th report, 27th, 40th, 54th and 55th reports of the Law Commission. On the basis of these reports of the Law Commission, a major amendment was made into the CPC in 1976. In 1976, to expedite the disposal of the civil suits so that the justice may not be delayed. This was the major reason behind this amendment, and this was a major amendment. This was a thorough amendment to the CPC. एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था 1976 का, जो कि 27, 40, 54, 54 और 55 जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर इसको किया गया था. टू एक्सपेडाइट द डिस्पोजल ऑफ द सिविल सूट्स सो दैट द जस्टिस मे नॉट बी डिलेड. ऑब्जेक्ट क्या था? एक्सपेडाइट द डिस्पोजल ऑफ द सिविल सूट्स. जो सिविल सूट्स में जो डिस्पोज ऑफ है उसको एक्सपेडाइट करना था, उसको तेज करना था, रिलीफ जल्दी से देना था पार्टीज को, ताकि जस्टिस डिले ना हो. सो 1976 amendment was a major amendment and some structural changes were brought into the CPC. Structural changes इसने करे CPC के अंदर. But it was not sufficient.
for the expeditious disposal of the civil suits. This was the major reason behind the amendment, behind this 1976 amendment, to expedite the disposal of the civil suits so that the justice may not be delayed. But it was not sufficient for the expeditious disposal of the civil suit. इससे जो expeditious disposal करना था, बहुत जो जल्दी जल्दी सूट्स को निपटारा करना था, उनको डिस्पोज ऑफ करना था, उसके लिए कहीं ना कहीं sufficient नहीं. It was found that it is not sufficient. 1976 amendment. So the government appointed, now this was a 1976 amendment, so you need to remember, you have to remember rather, these dates, 1976. Right? So, as I said, that it was found that this was 1976 amendment was not sufficient for the expeditious disposal of the civil suits. ये sufficient नहीं पाया गया. And the government appointed Justice Malimat Committee. Justice Malimat Committee. Justice Malimat Committee. And on the basis of the recommendations given by the Justice Malimat Committee, 2 amendments were made to the CPC. 1999 and 2002. 1999 and 2002. 1999 और 2002 का amendment किया गया to expedite the disposal of the civil suits on the recommendations of the Justice Malimat Committee. सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो 1999 और जो 2002 का अमेंडमेंट था वो किसकी रिकमेंडेशंस पे हुआ था, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हुआ था. पीटी में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. जस्टिस मलिमत कमेटी. राइट. 1999 का जो अमेंडमेंट था, इट वाज सेंट बैक बिकॉज ऑफ द ग्रेट अपोजिशन फॉर द रिकंसिडरेशन को इसको के लिए इसको वापस भेज दिया गया था. And when it was reconsidered, 1999 amendment and 2002, they both came into force came into existence with an effect from 1st July 2002. 1999 and 2002 amendment, they both came into existence, they both came into force with an effect from 1st July 2002. ये दोनों के ही दोनों अमेंडमेंट कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2002. 1st July 2002 को ये दोनों के दोनों these both amendments came into force, came into existence. Right? So ये जो dates है ये बहुत important है prelims के लिए. आप you please note down all these dates. The 1976 amendment, it came into force, it came into existence with an effect from 1st February 1977. 1976 का जो अमेंडमेंट था वो 1st February 1977 में आया था. It came into existence on 1st February 1977. Then what about the 1908? 1908 CPC 5 of 1908. When did this come into force? When did CPC 1908 come into existence? ये कब आया? It came into existence with an effect from 1st January 1909. 1st January 1909, Code of Civil Procedure 1908 came into existence, came into force. 1 जनवरी 1909 को CPC लागू हो जाता है. Now here, prelims का एक और बहुत important question है. Now, as I told you that this 1908 CPC, it is a pre-constitutional act. It is a pre-constitutional code. संविधान के आने से पहले का ये कानून है. तो संविधान, generally the president of the country gives the assent to a bill and then it becomes an act. But president तो उस टाइम था ही नहीं इंडिया का. Then who gave the assent to this CPC 1908? Governor General.
So this is a very important question which can be asked in prelims. Governor General. So the CPC 1908 received the assent of the Governor General on 21st March 1908. 21 मार्च 1908 को गवर्नर जनरल ने एसेंट दिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को. राइट. सो दीज डेट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स. इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो. CPC 1908, CPC 1908, it came into existence with an effect from 1st January 1909. अभी अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है उसको ही ये लागू हो रहे हैं ज्यादातर. ठीक है. और उससे नेक्स्ट ईयर पे हो रहे हैं. These kind of strategies, these kind of इस तरीके के आप टेक्निक्स बना सकते हो याद रखने के लिए. 1 जनवरी 1909 1908 का है और 1909 में आया. 1976 अमेंडमेंट एक्ट. It came into existence with an effect from 1st February 1977. 1st February 1977. ये भी फर्स्ट को आया और ये 76 का था तो 77 में आया. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दीज डेट्स, बिकॉज डेट्स को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि इस तरीके से आप यू कैन रिमेंबर दीज डेट्स. राइट. सो 1999 and 2002 Amendments Act. 1st July 2002. 1st July 2002. तो आप अगर देखेंगे तो 1 तारीख को ही आ रहे हैं सारे, है ना, 1 तारीख को. और ये जो 1908 है तो अगले साल में 1909, 1976 है तो 1977 में. राइट. ये 2002 है तो 2002. राइट. सो 1908 CPC, it received the assent of the Governor General of India on 21st March 1908. 21 मार्च 1908 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एसेंट दिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को. ठीक है. सो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिल पे एसेंट देते हैं, देन इट बिकम्स एन एक्ट. राइट. पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है. जब वो बिल पास हो जाता है इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में भी राज्यसभा में विद द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, देन इट गोज फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देता है, द मोमेंट द प्रेसिडेंट गिव्स द एसेंट टू द सेड बिल, इट बिकम्स एन एक्ट. तो वो कानून बन जाता है. तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये CPC का जो बिल था, इस पे जो एसेंट दिया गया था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया था. गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट ने नहीं दिया था, बिकॉज 1908 का कोड है ये, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो आर्टिकल 372 of the Constitution of India gives life to all these laws and the acts which are pre-constitutional. Right? So now let's understand the different aspects, the different basics of CPC. Okay, so far we have discussed about the importance of CPC and its historical background. In the historical background, I told you about many amendments of CPC, 1951, 1956, 1976, 1999 and 2002 amendment. These were the major amendments of CPC. These were the important amendments of CPC. It does not mean that these are the only amendments which have been made so far to the CPC. 1976 का अमेंडमेंट हुआ या फिर 1999 का या 2002 का अमेंडमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये बड़े अमेंडमेंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे CPC के.
इसका मतलब ये नहीं है कि यही अमेंडमेंट सिर्फ अभी तक हुए हैं सीपीसी में. अपार्ट फ्रॉम दीज अमेंडमेंट्स देयर आर मेनी अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड सो फार टू द सीपीसी. इनके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट सीपीसी में अभी तक हो चुके हैं, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी. सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी. Object of CPC. Well, the object of CPC is to serve the ends of justice and to bring about a proper harmony in the conflict of interest of the individuals. The object of CPC is to serve the ends of justice, to further the ends of justice, to prevent the ends of justice from being defeated. न्याय करना CPC का ऑब्जेक्ट है. To serve the ends of justice, to further the ends of justice, and to prevent the ends of justice from being defeated. इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अन्याय ना हो, इसको रोकना भी सीपीसी का ऑब्जेक्ट है. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी इज टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू ब्रिंग अबाउट अ प्रॉपर हार्मनी इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल्स के बीच में, जो सिविल डिस्प्यूट है इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको रिजॉल्व करके एक प्रॉपर हार्मनी को स्थापित करना भी सीपीसी का ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी, द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी इज टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस, is to serve the ends of justice and to bring about a proper harmony in the conflict of interests of the individuals. The object of CPC is to serve the ends of justice. न्याय करना, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, to further the ends of justice, to prevent the ends of justice from being defeated. कि अन्याय ना हो, इसको रोकना भी सीपीसी का ऑब्जेक्ट है. And to bring about a proper harmony, and to bring about a proper harmony in the conflict of interest of the individuals. जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिस्प्यूट है, जो सिविल डिस्प्यूट्स है इंडिविजुअल्स के बीच में, उनको सॉल्व करके, उनको रिजॉल्व करके एक प्रॉपर हार्मनी को स्थापित करना भी सीपीसी का ऑब्जेक्ट है, राइट. नाउ इफ यू विल गो डीप इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी, तो आपको जो चीज समझ में आएगी वो ये है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, टू फर्दर द एंड्स ऑफ जस्टिस, to prevent the ends of justice from being defeated. न्याय करना या अन्याय को होने से रोकना ही सीपीसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है. और अगर ऐसा करेगा सीपीसी, तो उससे क्या होगा? एक प्रॉपर हार्मनी आएगी. एक प्रॉपर हार्मनी आएगी इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, राइट. नाउ इफ यू विल फ्लिप द पेजेस ऑफ योर बेयर एक्ट एंड यू कम टू द पेज जहां पे सेक्शन 1 शुरू होता है, यू कम टू द पेज जहां पे सेक्शन 1 शुरू होता है, यू विल फाइंड इसके टॉप पे लिखा होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, राइट. फ्लिप द पेजेस ऑफ योर बेयर एक्ट एंड कम टू द पेज जहां पे सेक्शन 1 शुरू होता है. एट द टॉप ऑफ दिस पेज इट विल बी रिटन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इसके नीचे लिखा होगा विद इन द ब्रैकेट्स 5 of 1908, 5 of 1908, and at the right hand side it would be, now here it will be the date on which this code had received the assent of the Governor General, 21st March 1908. Here on the top right, 21st March 1908. This is a date on which the Code of Civil Procedure received the assent of the Governor General. मैं आपको बता चुका हूं 21 मार्च 1908. इसके बाद जो लाइन शुरू हो रही है,
An act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. This is the preamble of the CPC. An act to consolidate and to amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. ये CPC की preamble है, which is telling us the object of CPC, जो कि हमें CPC का object बता रही है. So here, according to the preamble of the CPC, the object of CPC is to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. मैं एक बार बता देता हूं लिख के आपको. This is the preamble of the CPC. An act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. The object of CPC according to the preamble of the CPC is to consolidate and amend the laws. Consolidate करना है और amend करना है किसको? Laws relating to the procedure of courts of civil judicature. जो civil judicature के जो courts है उसके procedure को, उससे related जो laws है उनको consolidate करना है और उसको amend करना है. Civil judicature means civil courts जो है. To consolidate means to make solid, to make firm, मजबूत बनाना है. And to amend means with the passage of time there are many things which keep on adding. जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे समय बीतता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है. The Code of Civil Procedure was enacted in 1908. 1908 का कोड है ये. क्या ये पॉसिबल है कि 1908 में ये स्पेक्युलेट किया जा सकता था कि आप ये प्रेडिक्शन किया जा सकता था कि 2021 में क्या होगा? The legislature is incapable of contemplating the events which are going to be there in the future and to make laws accordingly. Legislature incapable है कि आने वाले टाइम में किस तरीके के इवेंट्स होंगे, किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस होंगे और अकॉर्डिंगली उनके और उसके अकॉर्डिंगली लॉज बनाना. दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो अमेंड कर सकता है. अमेंड करना और कंसोलिडेट करना है प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स का जो लॉ है. जो सिविल कोर्ट्स का, जो सिविल जुडिकेचर का मतलब जो सिविल कोर्ट्स हैं उनका जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड जो लॉ है उसको कंसोलिडेट भी करना है और उसको अमेंड भी करना है. Now, if you will see the gist of the object of CPC, the moral of the story is this, that in the interest of justice, to further the ends of justice, to prevent the ends of justice from being defeated, ये सारा काम है CPC के, ये सारा कुछ है CPC के ऑब्जेक्ट में. बिकॉज कंसोलिडेट करना का क्या मतलब है? आप सॉलिड करना चाहते हो, आप उसको फर्म करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो. अमेंड करने का मतलब क्या है कि आपके पास लॉ है और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ एक चीजें आई, उनको डील करने के लिए आपको प्रोविजंस कुछ और चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, कुछ ऑल्टरेशंस आपको करनी पड़ेंगी, कुछ एडिशंस आपको करनी पड़ेंगी, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. Now here it strikes to my mind section 151 of CPC, even though it is not here, it is not related to the object of CPC, but somewhere in the interest of justice और ये सारी चीजें वहां पे भी आती है. There are many provisions in CPC जो कि जिसमें कि interest of justice और इन सब की बातें होती हैं, because that is the very object of CPC. Section 151 saving of inherent powers of court. Inherent powers होते हैं. There is a full-fledged lecture on this on the inherent powers of the court. Section 151 इसके लिए एक पूरा का पूरा लेक्चर है, वहां पे सब कुछ डिस्कस करेंगे हम. बट अभी इट स्ट्राइक्स टू माई माइंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ CPC वी आर डिस्कसिंग. सेक्शन 151 सेज सेविंग ऑफ इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ कोर्ट्स. इनहेरेंट पार्ट्स की बात करता है. इट रीड्स एज
that nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent parts of the code, to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the code. मैं दोबारा से एक बार इसको बताता हूं आपको. Section 151, inherent parts of the code. Nothing in this code मतलब CPC. CPC में कुछ भी ऐसा नहीं है. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent parts of the code. कि जो inherent parts है कोड की, उसको CPC के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ना तो लिमिट कर सकता है ना अफेक्ट कर सकता है. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent parts of the code to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the court. कोई ऐसा ऑर्डर पास करने से जो कि न्याय के लिए फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कोर्ट पास कर रहा है, या फिर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसका अब्यूज ना हो, उसको रोकने के लिए अगर कोई ऑर्डर पास करना चाहता है कोर्ट, तो इनहेरेंट पावर्स सेक्शन 151 में कोर्ट के पास है. तो अमेंड की बात हो रही थी, तो यहां पे इट रिमाइंडेड मी सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, दैट इज द इनहेरेंट सेविंग ऑफ इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ द कोर्ट. इनहेरेंट पार्ट्स सिविल कोर्ट्स में सभी के सारे सिविल कोर्ट्स के पास होती है, बट इन क्रिमिनल कोर्ट्स इट इज ओनली देयर विद द हाई कोर्ट्स. ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बाद में, राइट. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी is to serve the ends of justice and to bring about a proper harmony in the conflict of interest of the individuals. If you will read the preamble of the CPC, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हो कि CPC के ऑब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं और मुझे लिखना चाहिए, तो you should refer the preamble of CPC. That an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature, this is the object of CPC given in the CPC itself, right? तो ये CPC का ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का, किसी भी कानून का, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ CPC. CPC की स्कीम क्या है? स्कीम ऑफ CPC. Now, you can divide, or the CPC can be bifurcated in three parts to understand it. CPC. First part is the body of CPC. Body, which contains 158 sections. 158 sections into it. The body of CPC. Second is Schedule 1. Now earlier there were 5 schedules in CPC, but the remaining 4 schedules have been repealed. पहले 5 schedules थे CPC के अंदर, बाकी के जो 4 schedules हैं उनको अभी रिपील कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, अभी सिर्फ Schedule 1 रह गया है. There are 51 orders. 51 orders into it, into Schedule 1. And in orders there are various rules. बहुत सारे रूल्स हैं ऑर्डर्स के अंदर. ये क्या होते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ CPC, मैं ऐसे ही बता रहा हूं फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ CPC इज ऑर्डर नंबर 21. इट कंटेन्स 106 रूल्स. 106 रूल्स हैं ऑर्डर 21 में. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करता है. The third part of CPC is appendix. There are 8 appendix. 8. A to H. A से H तक appendix है 8. Now appendix में there are formats of pleading. Formats. What will be the format of a plaint? What will be the format of a written statement? ये सारे formats, standard formats यहाँ पे अपेंडिक्स में दिए हुए हैं. बेरेक की अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपको अपेंडिक्स मिलेगी. A to H 8 अपेंडिक्स है, राइट. सो CPC कैन बी डिवाइडेड, कैन बी बाइफिकेटेड इन 3 पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट.
ये तरीका है सीपीसी की शुरुआत करने का. Body of CPC contains 158 sections, and these are the main provisions of CPC. Sections are the main provisions. Sections are the main provisions of CPC. Sections contain the principles, the general principles. Sections जो होते हैं CPC के वो main provisions होते हैं. Even though it is a wrong statement, but just to understand we can say the sections are the substantive part of the rules or the orders. कि जो sections होते हैं वो substantive part होते हैं orders. Substantive क्या होता है, procedural क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. So body of CPC contains 158 sections total, and these are the main provisions. These contain the general principles or the principles of CPC, and their procedure. The procedure is given in the rules. जो orders के अंदर rules हैं उसमें इनका procedure होता है, उनमें इनका procedure होता है. Procedure of the main provisions, the general principles which are given under the section. Sections are not elaborative. They have been elaborated in the rules. जो sections होते हैं वो elaborated नहीं होते हैं. Not elaborative. They have been elaborated in rules. They have been elaborated in rules. जो orders के अंदर rules हैं उनमें इनको elaborate किया गया है. जो sections होते हैं वो elaborate नहीं होते. They contain the principles, the general principles. They are the main provisions. Main provision sections होते हैं. और जो orders और जो rules होते हैं, these are the procedure. The rules contain the procedures of the sections. इनके जो procedure है वो rules के अंदर दिए हुए हैं. And the rules are elaborated. Sections are not elaborative. Right? So एक बहुत important चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. Appendix, I've already told you that the appendix, there are 8 appendix and A to H, and there are formats of pleadings. Pleadings के formats हैं यहाँ पे कि plaint का क्या format होगा, written statement का क्या format होगा, और जो बहुत सारी जो pleadings होती है उनके क्या format होंगे, वो सारे formats appendix में दिए हुए हैं. Now here a very important thing, a very important information prelims के point of view से, that CPC is a subject matter of the concurrent list given in the 7th schedule of the Constitution, list number 3. CPC is a subject matter of list number 3 of 7th schedule of the Constitution of India. That is called the concurrent list of the 7th schedule of the Constitution of India. CPC जो है वो subject matter है, subject matter है of list 3 of 7th schedule of the Constitution of India. जो 7th schedule है Constitution का, now मैं एक बार आपको बता देता हूँ. In the 7th schedule of the Constitution, ये इसको हम Constitution करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे obviously, बट अभी के लिए बताना चाहता हूँ because prelims का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आप मेंस में भी इसको रेफर कर सकते हो. That CPC is a subject matter of the concurrent list, which is the list number 3 of the 7th schedule of the Constitution of India. If you will see entry number 13, 7th schedule. Now in 7th schedule of Constitution, there are 3 lists given. List number 1,
list number 2 and list number 3. 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के. जो लिस्ट 1 है वो यूनियन लिस्ट है, इसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है. So whatever the subjects given in list number 1, union list, union has a special power, exclusive power to make laws on these subjects which have been given in the list 1, the union list. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स दिए हुए हैं उसमें एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन होता है यूनियन का टू मेक लॉज और टू अमेंड दोज लॉज रिलेटिंग टू दोज सब्जेक्ट्स. उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार होता है, एक्सक्लूसिव जो पावर होती है वो यूनियन के पास होती है. जो लिस्ट नंबर 2 होती है दैट इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट and the subjects given in the state list, the state has a exclusive jurisdiction to make laws on these subjects which have been given in the subject in the state list. State list के अंदर जो subjects होते हैं उसमें state के पास exclusive power होती है उनके ऊपर कानून बनाने की या उनको amend करने की. List number 3 which is called the concurrent list, the subjects given in the concurrent list, the subjects given in the list number 3, both the union as well as the state, union legislature as well as the state legislature have the power to make laws or to amend the laws relating to the subjects given in the concurrent list. दोनों के पास पावर होती है, एक्सक्लूसिव पावर होती है कि दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जो कि लिस्ट नंबर 3 में दिए हुए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं, या फिर उनको अमेंड कर सकते हैं. इफ यू विल सी एंट्री नंबर 13 एंट्री नंबर 13 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. सो इन एंट्री नंबर 13 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज गिवन देयर. लिमिटेशन और आर्बिट्रेशन भी वहीं पे दिया हुआ है एंट्री नंबर 13 में. सीपीसी की अभी हम बात कर रहे हैं. तो एंट्री नंबर 13 ऑफ लिस्ट 3 विच इज कॉल्ड एज द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स सीपीसी एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ दैट द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज द यूनियन लेजिस्लेचर बोथ कैन अमेंड और मेक लॉज related to the CPC. CPC को स्टेट लेजिस्लेचर भी और यूनियन लेजिस्लेचर भी दोनों के पास पावर है टू अमेंड और टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द CPC. CPC के संदर्भ में या CPC के ऊपर CPC को अमेंड भी कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा उसकी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है और यूनियन लेजिस्लेचर के पास भी है, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी गई हैं उसमें जो 3rd लिस्ट है विच इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 13 ऑफ दैट लिस्ट कंटेन्स CPC as a subject matter of list number 3. It means both the union legislature as well as the state legislature can make laws and amend the CPC. CPC को amend कर सकती है और CPC पे laws बना सकती है, कानून बना सकती है state legislature भी और union legislature भी. This is a very important thing. Prelims में पूछा जाता है कि who can make or who can amend CPC. Option A, union legislature. Option B, state legislature. Option C, both. Option D, none of them, none of the above. So the answer is both. Union legislature as well as the state legislature can amend CPC because CPC is the subject matter of the concurrent list given in the 7th schedule of the Constitution. So CPC is the subject matter of list number 3 of 7th schedule of the Constitution, which means
that both union legislature as well as the state legislature can amend the CPC, the entire CPC, right? यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स का कि जो बॉडी ऑफ CPC है विच कंटेन्स 158 सेक्शंस, मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट? और जो शेड्यूल 1 है जिसमें कि 51 ऑर्डर्स है और उन ऑर्डर्स के अंदर रूल्स हैं। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स का, वो ये है कि जो बॉडी है इन विच द सेक्शंस आर गिवन, सेक्शंस हैं, और जो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 है जिसमें कि orders, and in orders rules are given, then to the body means to the sections and to the rules, both the union legislature as well as the state legislature can amend, because the CPC is the subject matter of the of list 3, the concurrent list of the 7th schedule of the constitution, right? यहाँ पे एक और जो important question की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि sections को तो union legislature and state legislature both can amend, and the same is the case of the rules, कि rules को भी वही कर सकते हैं। But in cases of rules, if you will see part 10 of CPC, part 10 of CPC, section 121 to section 131 of CPC, 121 से अगर 131 sections को आप अगर देखेंगे part 10 में, part 10 में CPC के, so you will come across that the high courts have been given, the high courts have been conferred the powers to amend the rules of the CPC. तो high courts के पास power है, high court. High court can amend the rules, the orders of CPC, along with the union legislature and the state legislature. State legislature और union legislatures के अलावा high court को भी power दी गई है part 10 of CPC, section 121 to section 131, कि high court भी rules को या फिर orders को amend कर सकते हैं. So this becomes a very important question of prelims, जो कि frequently पूछा जाता है in most of the times. ये जो जनरल जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा कि CPC को कौन कौन अमेंड कर सकता है, तो उसका आंसर था बोथ. अगर आता है कि सेक्शंस को कौन कौन अमेंड कर सकता है, तो उसमें हाई कोर्ट हैज नो पावर टू अमेंड द सेक्शंस ऑफ द CPC, बिकॉज सेक्शंस आर द मेन प्रोविजंस ऑफ द CPC. द लेजिस्लेचर हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू अमेंड or to make laws related to the sections. But when it comes to the rules, when it comes to the orders of CPC, then along with the legislature, the union legislature and the state legislature, the powers have been given to the high courts as well, and that is given under the CPC itself. Part 10 of CPC, section 121 to section 131. Part 10 में अगर CPC के अंदर आप देखोगे तो सेक्शन 121 से सेक्शन 131 तक हाई कोर्ट्स को पावर है कि वो रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, ऑर्डर्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन सेक्शंस को नहीं अमेंड कर सकते. तो अगर क्वेश्चन आता है दैट हु कैन अमेंड द सेक्शंस ऑफ CPC, यूनियन लेजिस्लेचर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द हाई कोर्ट्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर and high court. They all have powers to amend the rules or the orders of the CPC, right? So these were very important questions. यहाँ से अभी इसको और आगे जाके हम समझते हैं कि CPC में और क्या बेसिक्स हैं, right? Okay, now let's go a little more deeper and understand the basics of CPC. Here, the first and the foremost thing that we need to understand is what is cause of action. Cause of action. Cause of action. COA. Now, cause of action is actually the pivot of the suit. It is the center of the suit. सूट का केंद्र बिंदु होता है cause of action. अगर cause of action नहीं है तो सूट भी नहीं है.
Cause of action means you have a civil right and another person has violated your civil right. So you've got a right to file a suit, to institute a suit against that person, to initiate the civil proceedings against that person who has violated or who has infringed your civil right. आपके पास एक सिविल राइट है और किसी दूसरे पर्सन ने उसको इन्फ्रिंज कर दिया है, उसको वायलेट कर दिया है, उसको तोड़ दिया है. अब this violation of your civil right has given you a right to institute or to initiate the civil proceedings against that person who has violated or who has infringed your civil right. जिसने आपके सिविल राइट को इन्फ्रिंज किया है, वायलेट किया है, उसके अगेंस्ट आप सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो. तो ये कॉज ऑफ एक्शन होता है. कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यू में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉज ऑफ एक्शन, और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या बोलूं मैं, राइट. सो कॉज ऑफ एक्शन इज नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल राइट and the violation of the same by the another person, which gives you a right to initiate the civil proceedings or to institute a civil suit against the person who has violated your civil right. So cause of action क्या होता है? Civil right and the violation of that civil right. So you have a civil right and another person किसी इंसान ने उस civil right को infringe कर दिया है, violate कर दिया है. So you've got a right to institute or to file or to initiate the civil proceedings or the civil suit against the person, against that person who has violated or who has infringed your civil right. मैंने क्या बताया कि आपके पास एक सिविल राइट है और उस सिविल राइट को किसी दूसरे पर्सन ने तोड़ दिया है, इन्फ्रिंज कर दिया है, वायलेट कर दिया है. तो अभी आपके पास राइट है to initiate a civil proceeding against that person. उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का आपके पास अधिकार है, आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो. ठीक है. नाउ दिस इज अ सिविल राइट एंड द वायलेशन ऑफ दैट सिविल राइट. नाउ व्हाट इज अ सिविल राइट? सिविल राइट क्या होता है? सिविल राइट मीन्स अ राइट विच हैज बीन कन्फर्ड बाय लॉ. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि सिविल राइट क्या होता है. सिविल राइट इज अ राइट विच हैज बीन कन्फर्ड बाय लॉ, विच हैज बीन गिवन बाय लॉ. जिस राइट को, जिस अधिकार को लॉ ने आपको दिया है. एंड अभी यहां पे एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉन्ग्स. रॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग्स आर ऑफ टू टाइप, सिविल रॉन्ग, सिविल एंड क्रिमिनल. Civil and criminal. Now a civil wrong is against an individual. Civil wrong is against the individual, right? Whereas a criminal wrong is against the society at large, is against the public at large, against the society or the public at large. एक सिविल रॉन्ग जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, जबकि एक जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो सोसाइटी एट लार्ज और द पब्लिक एट लार्ज, वो पूरी पब्लिक के अगेंस्ट होता है. अगर आपने कभी देखा होगा जो एक सिविल सूट होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया है, राहुल प्लेंटिफ वर्सेस Arun defendant. This is how a civil suit is filed. The name of the parties. So Rahul is an individual. He has filed a suit against Arun, who is a defendant. So
This is how a civil suit is filed and this is how the name of the parties are written. But अगर आप एक क्रिमिनल केस को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ, लेट्स सपोज राहुल अक्यूज्ड है, राहुल वर्सेस स्टेट, राहुल वर्सेस स्टेट, राहुल इज अक्यूज्ड and the state will fight this case against the accused. Because a criminal wrong is against the society at large, it is against the public at large. If you remember, मैंने अभी आपको बताया object of CPC is to serve the ends of justice and to bring about a proper harmony in the conflict of interest of the individuals. Individuals के बारे में बात हो रही है, right? So यहां पे मैंने ये आपको क्यों बताया, यहां पे मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज मैं आपको सिविल राइट को समझाना चाहता हूं. सिविल राइट इज अ राइट विच इज कन्फर्ड बाय लॉ, विच इज गिवन बाय लॉ. मोरालिटी यहां पे नहीं आएगी, मोरल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहां पे नहीं आएंगी कि आपका मोरल राइट है, नहीं. अ राइट विच हैज बिन गिवन और विच हैज बिन कन्फर्ड बाय द लॉ and which is not criminal, which is a civil right. Criminal नहीं आएगा यहां पे, civil आएगा, means a wrong against an individual, right? So उसको क्या बोलेंगे, civil right, right given by the law, which is not criminal, which is not क्रिमिनल इन नेचर, जो कि क्रिमिनल नहीं है, एक सिविल राइट है. सो यू हैव अ सिविल राइट एंड अनदर पर्सन हैज वायलेटेड योर सिविल राइट, सो यू हैव गॉट व्हाट, यू हैव गॉट अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट दैट पर्सन, अ क्लेम अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज वायलेटेड योर सिविल राइट. यू कैन इनिशिएट द सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट पर्सन. तो यहां पे मैंने बोला सिविल राइट मीन्स अ राइट विच हैज बीन कन्फर्ड बाय लॉ, जो कि लॉ ने आपको दिया है, राइट? अभी लॉ क्या है? लॉ, सिविल राइट मीन्स अ राइट विच हैज बीन कन्फर्ड बाय लॉ एंड विच इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर, जो कि क्रिमिनल नेचर में नहीं है. मैंने बताया आपको द रॉन्ग्स आर ऑफ टू टाइप, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग. क्रिमिनल रॉन्ग मीन्स अ रॉन्ग विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज. दैट इज वाई द नेम ऑफ द अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट उसमें होता है, क्योंकि स्टेट फाइट करता है. क्योंकि जो एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो पूरी की पूरी मानवता के अगेंस्ट होता है, वो सभी के अगेंस्ट होता है, दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटी. और जो एक सिविल रॉन्ग होता है दैट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल. इसीलिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट का भी बताया, ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी में. अभी मैंने बोला है अ लॉ विच इज कन्फर्ड, राइट विच इज कन्फर्ड बाय द लॉ, जो कि सारे के सारे राइट्स नहीं आ जाएंगे वहां पे, मॉरल राइट्स नहीं आ जाएंगे. ओनली दोज राइट्स विच हैव, सिविल राइट्स आर ओनली दोज राइट्स विच आर कन्फर्ड बाय द लॉ, विच आर गिवन बाय द लॉ. अब लॉ कितने टाइप? अब लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग द लॉ इन कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड. Codified and uncodified. Codified law means the law which is made by a competent authority just like legislature. जो एक competent authority law बनाती है, जैसे कि legislature, parliament law बनाती है, उसको codified law बोलते हैं, made by competent authority. And uncodified law which is made by judges or by the judiciary through a long process. Precedents आपने सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उस पर कोई अभी तक कोडिफाइड लॉ नहीं है, पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी लॉ, बट देयर इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है और वो इसके जो नीचे के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो फॉलो कर रहे हैं. सो द लॉ मेड बाय द जजेस और बाय द जुडिशरी बाय फॉलोइंग और थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस, जो कि एक बड़ी लंबी प्रोसेस से जो लॉ बनते हैं, जो जुडिशरी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनकोडिफाइड. वो कोडिफाइड नहीं है.
वो लिखे नहीं हुए हैं कहीं पे। लिखे हुए ऑब्वियसली जजमेंट्स हैं, बट कोडिफाइड का मतलब है विच इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाइक लेजिस्लेचर, एंड दीज लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, हम कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एंड दीज लॉज आर कॉल्ड एक्ट्स और स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स या एक्ट्स उनको बोलते हैं। एंड कोडिफाइड लॉ मेड बाय द जुडिशरी थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक ब्रांच है लॉ की। ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकोडिफाइड लॉ विच इज मेड बाय जुडिशरी और द जजेस थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ को आप क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। Criminal law are those laws in which the criminal wrongs are dealt with. Criminal wrong को जो deal करता है means a wrong against the society at large. Civil law, just like Civil Procedure Code, Code of Civil Procedure CPC, in which the wrong against the individuals are dealt with. ठीक है, इसको हम further divide कर सकते हैं, लॉ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ रही है, वो ये, अभी एक बार इसको मैं यहां पे ऐसे बता देता हूं। लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। Substantive law and procedural law. The rights and the liabilities that you have would be useless, would be meaningless, unless they are enforced and determined. The rights and the liabilities that you have would be meaningless, would be futile, would be useless, unless you have a mechanism or the procedure to enforce those rights and liabilities or to determine these rights and liabilities. इसको मैं समझाऊंगा आपको, पहले यहां पे आ जाते हैं। Law, substantive law and procedural law. Substantive laws are those laws which determines the rights and the liabilities of the parties. Substantive law is a law that determines the rights and the liabilities of the parties, जो कि आपकी लीगल राइट्स, आपकी जो लीगल लाइबिलिटीज, लीगल ड्यूटीज होती हैं, उनको डिटरमिन करता है, उनको निर्धारित करता है। The function of a substantive law, the function of a substantive law is to define, create or confer the legal right or the legal status, or to define and impose the nature and the extent of the legal duties and the legal liabilities. ये फंक्शन है सब्सटैंटिव लॉ का, जो कि आपके लीगल राइट्स, आपके लीगल स्टेटस को कन्फर करता है, क्रिएट करता है, डिफाइन करता है, डिटरमिन करता है। डिटरमिन्स द राइट्स, rights means legal rights, rights and duties of parties. Procedural law provides the procedure or the manner or the mechanism for the enforcement of these legal rights or the legal liabilities in the court of law. इनको इन्फोर्स कराने का जो प्रोसीजर है वो कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजरल लॉ। इनका मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? मैनर कौन बताता है कि कौन से कोर्ट में जाना है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और किस तरीके से आपको रिलीफ कोर्ट ग्रांट करेगा। सो दिस मैनर, दिस मैकेनिज्म, दिस प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजरल लॉ। द फंक्शन ऑफ ए सब्सटैंटिव लॉ मैं आपको बता चुका हूं
The function of a substantive law is to define, create, confer, or to determine the rights, the legal duties, or to define and impose the nature and the extent of the legal duties or the legal liabilities. उनका क्या नेचर होगा, क्या एक्सटेंट होगा लीगल ड्यूटीज और लीगल लाइबिलिटीज का, उसको भी कौन बताएगा? सब्सटैंटिव लॉ. एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटैंटिव लॉ और द इंस्टेंसेस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ: इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. These are the instances, these are the examples of, and there are many others, examples of the substantive law. आप आईपीसी की बात कर लें, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर लें, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कर लें, एंड एक्सेट्रा. These are the substantive laws which determines the rights and the liabilities of the parties. And I said the function of a procedural law is to provide the mechanism, the manner, or the procedure to enforce these rights and the duties and the liabilities which are given by or which are determined by the substantive law. The procedure, the manner, the mechanism to enforce these rights in the court of law. So the procedure, how the substantive law is to be applied in a particular case, is given by the procedural law. Substantive law के अंदर जो आपको rights and liabilities दी जाती हैं, उन rights and liabilities का प्रोसीजर क्या होगा, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा किसी भी एक केस के अंदर, वो प्रोसीजर, वो मैनर, वो मैकेनिज्म कौन देता है? प्रोसीजरल लॉ. इंस्टेंसेस ऑफ प्रोसीजरल लॉ: CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर; CrPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर; Indian Evidence Act, etc. These are the instances, these are the examples of the procedural law. और जैसे मैंने शुरू में बोला अभी इससे पहले, when I was about to tell you of the law, that law can be divided into substantive law and the procedural law, मैंने एक चीज आपको बताई, that the rights and the liabilities that you have, these rights and liabilities which are determined by the substantive law, ये जो rights and liabilities हैं, these would be meaningless. ये rights and liabilities meaningless होंगी unless you have a procedure, unless you have a mechanism, unless you have a manner to enforce these rights and liabilities in the court of law. अगर आप इन rights and liabilities को enforce नहीं कर, जब तक आप इनको enforce नहीं करा पाओगे, तो ये एक तरीके से meaningless है, एक तरीके से useless है, इनका कोई मायने नहीं है इनके. मेरे पास एक राइट है बट उस राइट को मैं एनफोर्स नहीं करा सकता हूं. मेरे पास एक अधिकार है बट देयर इज नो रेमेडी टू दैट अधिकार, देयर इज नो रेमेडी टू दैट राइट. अ राइट विदाउट रेमेडी is a futile, is a meaningless. There is no use of that right. So, you have a substantive law which determines the rights and the liabilities of the parties, but if you don't have a procedural law, so that those rights and the liabilities would be meaningless, because you won't be able to enforce, to get those rights and liabilities enforced in the court of law. आप उन rights और liabilities को court of law में enforce ही नहीं करा पाओगे, because कोई procedure, कोई manner, कोई mechanism ही नहीं है उसका. It reminds me a Latin maxim which says ubi jus ibi remedium, a very important Latin maxim. Ubi jus ibi remedium. Ubi jus, this is jus, J-U-S, jus. Ubi jus ibi remedium, which means where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. So, the procedural law
It is the procedural law which provides life or which gives life to the substantive law by providing a remedy and implements this well-known maxim ubi jus ibi remedium. It is the procedural law. मैं क्या बोल रहा हूं? Procedural law लाइफ देता है substantive law को, रेमेडी प्रोवाइड करके, एक प्रोसीजर प्रोवाइड करके, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करके. And to implement a well-known maxim ubi jus ibi remedium, which means where there is a right, there is a remedy. So it is the procedural law which provides life to the substantive law by providing a remedy and to implement the very famous, the well-known Latin maxim ubi jus ibi remedium, which means where there is a right, there is a remedy. It is the procedural law. It is the procedural law which puts life into the substantive law by providing a remedy and to implement the well-known maxim ubi jus ibi remedium, which means where there is a right, there is a remedy. The efficacy of a substantive law to a large extent depends upon the quality of the procedural law. Unless the procedural law is inexpensive, simple and expeditious, however the substantive law is good, will fail to achieve its object and reaching to its goal. Substantive law की efficacy to a large extent depend करती है quality of procedural law, कि procedural law की quality क्या है जो हमारे पास procedural law है. जब तक procedural law expeditious नहीं होगा, उसमें एक fast relief आपको provide कराने का प्रोसीजर नहीं होगा, इनएक्सपेंसिव नहीं होगा. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, जो पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, उनको आप जस्टिस नहीं दे सकते हो. और सिंपल नहीं होगा. इफ इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इफ इट इज परप्लेक्स्ड, पेचीदा है, तो उस केस में भी आप जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते सबको. That is why it is said that it is the procedural law which puts life into the substantive law by providing a remedy to it and implements the well-known maxim ubi jus ibi remedium. And that is why it is said that the efficacy of a substantive law to a large extent depends upon the quality of a procedural law. Unless the procedural law is inexpensive, expeditious and simple, however the substantive law is good, fail to achieve its object and reaching its goal. उसका जो object है, object क्या है? To serve the ends of justice, to further the ends of justice, to prevent the ends of justice from being defeated. न्याय करना उसका object है, वो उसको नहीं अचीव कर सकता है. उसने जो गोल डिसाइड किया है, उस गोल को वो नहीं पा सकता है. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. You can write such lines in your answers, that the efficacy of the substantive law to a large extent depends upon the quality of the procedural law. Unless the procedural law, जब तक procedural law क्या नहीं होगा? Unless the procedural law is simple, expeditious and inexpensive, however good the substantive law is failed to achieve its object and reaching its goal. उसको ना तो वो अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर सकता है, ना वो अपने गोल को पा सकता है.
सो द प्रोसीजरल लॉ की जो क्वालिटी है वो डिसाइड करेगी एफिकेसी ऑफ द सब्सटैंटिव लॉ, कि सब्सटैंटिव लॉ की क्या एफिकेसी है, कितना एफिशिएंट होगा वो। इसको मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। द एफिकेसी ऑफ अ सब्सटैंटिव लॉ to a large extent depends upon the quality of the procedural law. Unless the procedural law is simple, expeditious, and inexpensive. However, the substantive law, however good the substantive law is bound to fail in achieving its object and in reaching to its goal. Right? So a law, मैंने आपको बताया that there must be a cause of action, a civil right which has been conferred by the law, which is not criminal in nature. If you have a civil right and another person has violated that right, so what will you do? You will file a claim. You can file a suit. मैं suit अभी नहीं बोल रहा हूं, I'm saying that you will file a claim. And that party and that person who has violated that civil right of yours is opposing that claim, is disputing that claim. वो dispute करेगा, वो oppose करेगा, तभी तो it will become a dispute, no? Otherwise admit अगर उसने कर लिया तो वो तो admissions में आ जाएगा and it will be disposed of. So the claim, because you need a relief from the honorable court, you need a redressal from the honorable court, because your civil right has been infringed, it has been violated by the another person, and you want a redressal, you want a relief from the honorable court, और आप चाहते हो कि क्योंकि आपका civil right infringe हुआ है, violate हुआ है, तो आपने claim किया है, और ये claim जिसको आप बोल रहे हैं कि इसने infringe किया है, वो अपोज कर रहा है, वो उसको डिनाई कर रहा है, वो उसको डिस्प्यूट वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने इसका कोई सिविल राइट नहीं वायलेट किया है. So this becomes a suit. You have instituted a suit against that person who has violated your civil right. Cause of action has given you a right to institute a suit against the person who has violated your civil right, and you have moved to the court. अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है that cause of action आपका है because your civil right has been infringed by another person. By another person it has been infringed, it has been violated. Now you want to move to the court. अब आप कोर्ट में जाना चाहते हो because you need a relief from the honorable court. Now अभी तक we haven't seen any provision of CPC. It was all the basics of CPC. It was all the basics of the
the civil procedure and you can say the basics of the law. अभी तक हमने CPC के किसी प्रोविजन की बात नहीं करी है. Now here for the very first time we'll enter into CPC. You've got a cause of action to file or to institute a suit against or to initiate the proceedings, the civil proceedings against the person whom you are saying that this person has violated or this person has infringed my civil right, and I seek from this honorable court the relief against the violation of my civil right. Now you want to file a suit. Now where will you go? Where will you institute the suit? कहां पे सूट इंस्टीट्यूट करोगे आप? Here comes the CPC. The CPC will tell you that where to go and where to institute the suit and in what court and in what manner the suit can be instituted and how the court will come to its decision, how the court will make its decision. ये सारा प्रोसीजर, ये सारी चीजें अभी CPC में आएंगी. Now I will tell you that how does CPC work. CPC किस तरीके से काम करता है. I'll give you a quick tour of CPC, a quick sum up of CPC. कि CPC के कौन कौन से प्रोविजंस कहां कहां पे क्या क्या बोलते हैं. So now let's see a sum up of CPC or a quick tour of CPC because यहां पे CPC open up हो गया है. Here we have entered into CPC. Your cause of action, you've got the cause of action, your civil right has been violated and now you want to move to the court. किस कोर्ट में जाना है? Where to institute the suit? Now let's see the provisions, the relevant provisions, the relevant sections and rules, the orders of CPC. Let's see how CPC works. I'll take you through the relevant provisions of the CPC, so please keep your barrack handy. You've got a cause of action because somebody has violated your civil right and now you want to institute a suit against that person who has violated your civil right. But you do not know where to institute the suit. आपके पास cause of action है और cause of action आपके पास है क्योंकि किसी ने आपका civil right violate किया है. अभी आप उस person के against जिसने आपका civil right violate किया है सूट फाइल करना चाहते हो बट आपको नहीं पता कि सूट कहां पे फाइल होगा. You've got a cause of action. Cause of action. And now you want to institute the suit, but आपको नहीं पता where to institute the suit. Please open your barrack and come to section number 15. Section 15. Section 15 reads, court in which suits to be instituted. Court in which suits to be instituted. Section 15 says, court in which suits to be instituted. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade. In the court of lowest grade competent to try it. Competent to try it. Competent to try it. कहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा? Every suit shall be instituted in a court of lowest grade. जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा वहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा. जो सबसे छोटा कोर्ट होगा, सबसे नीचे का जो कोर्ट होगा वहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा. Now here you can read section 3 of CPC which says subordination of courts. Subordination of courts, hierarchy of courts is given under section 3. So lowest grade के लिए you can read section 3. तो सबसे पहले सूट आपको इंस्टीट्यूट करना है कहां पे?
lowest grade, court of lowest grade. Competent to try it. This lowest grade court must be competent to try a suit. ये इतना सक्षम होना चाहिए कि आपके सूट को ट्राई कर सके. तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, the suit shall be instituted in a lowest competent court. Lowest competent court. Lowest competent court सेक्शन 15 कहता है lowest competent court में आप सूट इंस्टीट्यूट करें. लोवेस्ट तो मैंने बता दिया, सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, यू कैन रीड दैट, जो भी सबसे नीचे का कोर्ट होगा उसमें. ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा होता है? कॉम्पिटेंट टू ट्राई, कि ये जो सूट है आपका, ये ऐसे कोर्ट में आपने इंस्टीट्यूट करना है जो कि एक लोअर कोर्ट है, एक लोवेस्ट कोर्ट है, और वो कॉम्पिटेंट भी है आपके सूट को ट्राई करने के लिए. वो सक्षम है कि वो आपके सूट को ट्राई कर सकता है. नाउ दिस कॉम्पिटेंसी कैन बी अंडरस्टूड pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction, and subject matter jurisdiction. Subject matter jurisdiction. For pecuniary jurisdiction, read section 6. For territorial jurisdiction, section 16 to section 20. And subject matter jurisdiction means that for the subject matter of your suit, you just have to check that whether there is a tribunal or the special court for that or not. जो आपके सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए कोई ट्राइब्यूनल या फिर कोई स्पेशल कोर्ट तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर रेंट मैटर्स देयर आर रेंट ट्राइब्यूनल्स, फॉर फैमिली डिस्प्यूट्स देयर आर फैमिली कोर्ट्स. तो इस तरीके से यू नीड टू चेक वेदर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर सूट देयर इज एनी ट्राइब्यूनल और द स्पेशल कोर्ट और नॉट. कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है सूट का, उसके लिए कोई ट्राइब्यूनल तो नहीं बनाया हुआ अलग से, या कोई स्पेशल कोर्ट तो नहीं है. अगर है तो आप उस ट्राइब्यूनल में या उस स्पेशल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करोगे. पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 6. पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मीन्स व्हाट? You need to evaluate your suit according to the relief that you are seeking from the Honorable Court. That what is the valuation of your suit? There is a Suit Valuation Act 1887. 1887. Suit Valuation Act. According to the Suit Valuation Act 1887, you can evaluate your suit and you can get the valuation of your suit. आप सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, अपने सूट की वैल्यू निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिलीफ दैट यू आर सीकिंग फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट. जो भी आप रिलीफ मांग रहे हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर है या फिर कॉम्पनसेशन मांग रहे हो या जो भी मैटर है, तो उसके हिसाब से आप अपने सूट की वैल्यूएशन निकाल लेते हो. नाउ पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? स्टेट्स, द रिस्पेक्टिव स्टेट्स decide the pecuniary limits of the civil courts. जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनकी पेक्यूनियरी लिमिट्स स्टेट डिसाइड करते हैं. राज्य जो होते हैं, रिस्पेक्टिव राज्य जो होते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो होते हैं, दे डिसाइड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दैट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में the state has decided that the matter of rupees 20 lakh, 20 लाख तक का जो मैटर है वो सिविल जज के पास जाएगा. सिविल जज में डिविजन्स होते हैं, सीनियर डिवीजन, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सिविल जज, जूनियर डिवीजन. हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं. आई एम नॉट गिविंग यू द प्रिसाइज लिमिटेशंस, द पेक्यूनियरी लिमिट्स. एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कोई एक स्टेट है जिसमें कि स्टेट ने डिसाइड किया है कि 20 लाख तक के मैटर सिविल जज के पास जाएंगे, 20 लाख से 2 करोड़ तक के मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे,
और 2 करोड़ और उससे ऊपर तक के जो मैटर होंगे वो हाई कोर्ट के पास जाएंगे. If you will see the criminal cases, higher the punishment, higher will be the court. जितनी पनिशमेंट हायर होती है, जितनी पनिशमेंट बड़ी होती है, उतना ही बड़ा कोर्ट होता है क्रिमिनल मैटर्स में. इन सिविल मैटर्स जितनी वैल्यूएशन आपके सूट की होगी अकॉर्डिंग टू द सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, उसी हिसाब से आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा पिक्यूनरी लिमिट्स कोर्ट्स की देखने के बाद. जैसे कि मैंने बताया एक एग्जांपल के तौर पे कि 20 लाख तक के मैटर मान लो स्टेट ने डिसाइड किया हुआ है, जिस भी स्टेट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, कि 20 लाख तक के मैटर सिविल जज देखेगा और 20 लाख से 2 करोड़ तक के मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा, डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे, और 2 करोड़ से ऊपर तक के मैटर हाई कोर्ट देखेंगे. तो अगर मान लीजिए आपके सूट की वैल्यू निकल के आती है 17 लाख, तो वो कहां पे आप इंस्टीट्यूट करेंगे? सिविल जज के पास आप इंस्टीट्यूट करेंगे. राइट. सो CPC is a private law. CPC governs or CPC regulates the relations of the individuals. CPC इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को गवर्न करता है, उनके रिलेशंस को रेगुलेट करता है, एंड CPC is a private law. So according to the pecuniary limits of the civil courts, you will institute your suit to that particular court जिसके pecuniary jurisdiction में आपके सूट की वैल्यू फॉल कर रही होगी. जैसे कि मैंने बताया, अगर 17 लाख आपके सूट की वैल्यू निकल के आती है, तो आप उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे जिसकी पिक्यूनरी लिमिट 17 लाख तक की है, या 17 लाख उसमें फॉल कर रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है. तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सेक्शन 6 एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 16 टू सेक्शन 20. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं. नाउ सब्जेक्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में you have to check the subject matter of your suit. Subject matter of your suit. अब ये सारी टर्म्स बड़ी नई है आपके लिए. These all terms are very new. Pecuniary jurisdiction, subject matter jurisdiction, territorial jurisdiction. We have full-fledged classes for all these topics. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, एंड एवरीथिंग. अभी हम सिर्फ एक क्विक टूर ले रहे हैं CPC का. इट्स अ रिव्यू, इट्स अ क्विक रिव्यू ऑफ CPC, इट्स अ क्विक सम अप ऑफ CPC. तो मैं आपको बता रहा हूं हाउ CPC वर्क्स, इसके रेलेवेंट, इसके प्रोविजंस किस तरीके से हम देखते हैं. आपको सूट इंस्टीट्यूट करना था क्योंकि किसी ने आपके सिविल राइट को वॉयलेट किया, उसके अगेंस्ट आपने सूट इंस्टीट्यूट करना. आपको नहीं पता कि कहां पे करना है. सेक्शन 15 बोलता है लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप इंस्टीट्यूट करें. लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स आपने देख लिया सेक्शन 3 में. कॉम्पिटेंसी के लिए हमने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन देख लिया कि ठीक है, मेरे सूट की जो वैल्यू है ये इतनी है अकॉर्डिंग टू द सूट वैल्यूएशन एक्ट, तो ये इस कोर्ट में जाएगा. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आपने सब्जेक्ट मैटर देखना है आपने सूट का कि क्या सब्जेक्ट मैटर है. मान लीजिए आपके सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 the suit shall be instituted where the immovable property is situated. तो कहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा? where the immovable property situate. इसके अंदर और भी चीजें हैं. proviso is there, explanations are there, that where the defendant voluntarily resides, works for gain, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस. ये सारी चीजें हैं वो हम व्हेन विल डिस्कस सेक्शन 16 पूरा लेक्चर है वहां पे हम देखेंगे. अभी के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से CPC काम करता है. सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 यू विल इंस्टीट्यूट योर सूट where the immovable property is situated. जहां पे वो immovable property है वहां पे आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे. सेक्शन 17 कहता है
कि इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, अगर डिफरेंट कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी यहां पे है और इसमें ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट ए का भी है और ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट बी का भी है, तो ऐसी अगर सिचुएशन है दैट द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, तो आप सेक्शन 17 में जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट का है, द ज्यूरिसडिक्शन इज अनसर्टेन, सो यू विल गो इन सेक्शन 18, अनसर्टेन है, jurisdiction is uncertain. If you want to institute a suit for the compensation for wrong to the person or wrong to the movable property, then you will see section 19, compensation for wrong to person or to movable property। और अगर सूट अगर सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इट डज नीदर इट फॉल्स अंडर सेक्शन 16 और नॉट सेक्शन 17 नॉट सेक्शन 18 और सेक्शन 19 तो अलग ही है, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बात कर रहा है, दैट इज अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टी और रॉन्ग टू द पर्सन। So in that case, section 20 is there. Other suits to be instituted where the defendant resides or the cause of action arises. Other suits का मतलब है कि जो सूट सेक्शन 16, 17 और 18 में नहीं फॉल करेगा, उसके अलावा अगर नहीं फॉल कर रहा तो सेक्शन 20 is a residuary section. Section 20 is a residuary section. The subject matter of the suit is immovable property and it does not fall in section 16 or section 17 or section 18. So there is a residuary section, section 20. Other suits to be instituted where the defendant resides or cause of action arises, cause of action arises। जहां पे cause of action arise हुआ है, जहां पे आपका सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ है वहां पे, या फिर जहां पे डिफेंडेंट रह रहा है वहां पे आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। नाउ ये सारी चीजें आपने देख ली हैं कि सेक्शन 15 बोल रहा है लोवेस्ट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप इंस्टीट्यूट करें। कॉम्पिटेंसी आपने देख ली कि पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, ये मेरे सूट का वैल्यूएशन है, अकॉर्डिंग टू दिस इट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन दिस कोर्ट। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कोई सब्जेक्ट मैटर है नहीं, कोई ट्राइब्यूनल कोई स्पेशल कोर्ट है नहीं इस सब्जेक्ट मैटर का। फिर आपने देखा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, वेदर इट इज अ सूट फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर अ कॉम्पनसेशन टू अ रॉन्ग टू अ पर्सन और टू द मूवेबल। ये सब देख दाग के आप एक कोर्ट के पास आपने देख लिया कि ठीक है इस कोर्ट में मैंने सूट इंस्टीट्यूट करना है, बट वहां पे ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं। ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 21 एंड सेक्शन 21A कैपिटल आप पढ़ लीजिए इसके लिए। And if the court comes to the conclusion that this court does not have a jurisdiction, so it will transfer your suit. Transfer the suit. For this, section 22 to section 25 are there. इसके साथ साथ ये तो आपने कॉम्पिटेंसी देख ली कि कहां पे सूट इंस्टीट्यूट करें। लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है और वो कॉम्पिटेंसी भी आपने चेक कर लिया है सब्जेक्ट मैटर पेक्यूनरी और टेरिटोरियल की। नाउ एक और चीज आपको चेक करनी है, वो क्या है? नाउ कम टू सेक्शन 9। सेक्शन
9. It says courts to try all suits, all civil suits unless barred. Section 9 is a very very important section. सेक्शन 9, यहां पे आपने कॉम्पिटेंसी तो चेक कर ली है कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है, कहां पे आपने इंस्टीट्यूट करना है. एक और चीज आपको चेक करनी है. सेक्शन 9 आप आ जाइए. सेक्शन 9 सेज कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. जो सिविल कोर्ट होते हैं वो सिविल सूट्स, हर सिविल सूट को ट्राई कर सकते हैं अनलेस बार्ड, अगर वो बार्ड नहीं है. सेक्शन 9 रीड्स एज द कोर्ट shall subject to the provisions herein contained. The court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature, excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Section 9 is a very important section. It says courts to try all civil suits unless barred. जब तक बार नहीं है, किसी तरीके की पाबंदी अगर नहीं लगाई हुई है, जब तक सारे के सारे सूट्स सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है. इसको एक बार ऐसे पढ़ते हैं. द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर. ये सूट ऑफ सिविल नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू द सिविल सूट. सिविल सूट से एक बड़ी टर्म है सूट ऑफ सिविल नेचर. इसमें बहुत सारे सूट्स फॉल कर जाते हैं. तो सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन सभी कोर्ट के पास है, सभी सिविल कोर्ट के पास है. Excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Express bar and implied bar. एक्सप्रेस बार एंड इम्प्लाइड बार ये क्या होते हैं, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा. सेक्शन 9 की क्लास है, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर, इसमें भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक है. यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कॉम्पिटेंसी आपने चेक कर ली है. कॉम्पिटेंसी चेक करने के बाद आपको एक और चीज चेक करनी है, वेदर द सूट इज बार्ड बाय द लॉ और नॉट. ये कहता है द कोर्ट शैल subject to the provisions herein contained. Subject to the provisions herein contained का मतलब है, herein contained का मतलब है subject to the provisions contained in CPC. जो CPC के अंदर ही जो provisions दिए हुए हैं, जो एक तरीके से बार लगाते हैं, उसको भी देखना है हमें. एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार तो देखना ही है, लेकिन दिस इज द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन्ड, मतलब जो हेयरिन का मतलब है CPC. CPC के अंदर जो प्रोविजंस हैं, उनमें जो बार है उसको भी देखना है कि क्या कहीं जो सूट है आपका उसको CPC ही तो नहीं बार करा है. Now this is whether it is expressly barred or impliedly barred, that is a different thing. वो बात की
चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी है। एक्सप्रेस बार है या इम्प्लाइड बार है तो भी आप नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर CPC हेयर इन कंटेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, तो मतलब CPC के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसमें जो बार्स दिए हुए हैं वो भी हमें देखने हैं। नाउ कम टू सेक्शन 1. Section 1 says that CPC does not apply to Nagaland and to the tribal areas. Nagaland and tribal areas. Tribal areas पे और Nagaland पे CPC does not apply. CPC does not apply. So this is a bar. CPC apply नहीं होता है वहां पे. Come to section 4. Section 4 talks about saving. It says where there is a local law or the special law, it will override CPC. जहां पे local law और special law होगा, that will override the CPC. A special law overrides the general law. And CPC is a general law and CPC is not an exception. जहां पे स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ होगा that will override CPC. वहां पे स्पेशल लॉ और द लोकल लॉ will be applicable and not CPC. CPC नहीं अप्लाई करेगा. See section 5. Section 5 says that all revenue matters are not the subject matter of CPC. All revenue matters are not the subject matter of CPC. CPC सभी रेवेन्यू मैटर्स पे अप्लाई नहीं होती है. सेक्शन 5 ये सारे बार्स मैं आपको बता रहा हूं जो CPC में दिए हुए हैं. If you will see section 7 and section 8, so they talk about courts, small causes courts. Small causes courts दो तरीके के होते हैं. Small causes courts are of two types: provincial small causes courts and presidency small causes courts. So provincial small causes courts section 7 बात करता है इसके बारे में, and you need to read section 7 with order 50. order 50 के साथ आपको section 7 को पढ़ना है. प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के बारे में सेक्शन 8 बात करता है, एंड यू नीड टू रीड सेक्शन 8 with order 51. order 51. Few sections of CPC do not apply to the provincial small causes courts and to the presidency small causes courts. Presidency small causes courts established in the presidencies of Calcutta, Madras and Bombay. तो इस पे नहीं अप्लाई होता है CPC. So this is also a bar. Now, if you will see section 10 res sub judice, if the matter is pending, if the suit is pending, then you cannot institute another suit on the same cause of action when the parties are same, matter in issue is same, and there are so many other things. बहुत important है section 10 res sub judice. मैटर पेंडिंग है, आपने सूट इंस्टीट्यूट किया हुआ है और दूसरी पार्टी ने एक और सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, तो रेस सब जुडिस है, स्टे हो जाएगा. यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट a suit if the parties are same, matter in issue same, cause of action is same. Section 11 res judicata. The suit has been finally heard and decided. It has been heard and finally decided. इसको सुन लिया गया, डिसाइड कर दिया कोर्ट ने. Now on the same cause of action you cannot institute a suit when the parties are same, matter in issue same, subject matter is same. So res judicata बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
Section 12, bar to further suit. Bar to further suit. Section 12, bar to further suit. It says where the plaintiff is precluded, where the plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit. Where the plaintiff is precluded by rules, जब प्लेंटिफ को रूल्स प्रीक्लूड करेंगे या करते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, कि आप फर्दर सूट नहीं इंस्टीट्यूट, रूल्स कहां पे हैं? इन द शेड्यूल ऑफ सीपीसी देयर आर 51 ऑर्डर्स एंड इन दीज 51 ऑर्डर्स देयर आर रूल्स गिवन. अगर प्लेंटिफ को, अगर आपको रूल्स प्रीक्लूड कर रहे हैं, रूल्स रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रूल्स रोक रहे हैं, दैट यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ फर्दर सूट, सो सेक्शन 12 उसके बारे में बात कर रहा है. ये कौन कौन से रूल्स हैं जो प्रीक्लूड करते हैं प्लेंटिफ को फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट? ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 22 रूल 9. नाउ प्लीज रिमेंबर that orders shall always be in Romans. मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, it must be like this. Order 2 rule 2. Orders must always be in Romans. रूल्स को आप न्यूमेरिक्स में लिख सकते हो, बट ऑर्डर्स हमेशा रोमन्स में होने चाहिए. सो ये कौन कौन से रूल्स हैं जो प्रीक्लूड करते हैं प्लेंटिफ को फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट? ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 9 एंड Order 23, Rule 1. These 4 rules preclude the plaintiff from instituting a further suit. Order 2, Rule 2, Order 9, Rule 9, Order 22, Rule 9 and Order 23, Rule 1. ये preclude करते हैं. Express and implied bar देखने हैं Section 9 में. ये सारी चीजें आपने देख ली है. आपने कॉम्पिटेंसी देख ली है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन चेक कर लिया है कि कहां पे सूट इंस्टीट्यूट करना है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देख लिया है, किसके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सारी चीजें करें. आपने देख लिया है एक्सप्रेस बार है या इंप्लाइड बार है, नहीं बार हो रहा है, रेस जुडिकाटा से तो बार नहीं हो रहा है, ऑर्डर 2 रूल 2 तो नहीं बार कर रहा है. ये सारी चीजें आपने देखने के बाद यू हैव कम टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट जहां पे आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है. इतना सब कुछ चेक करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर चेकिंग ऑल दीज थिंग्स, कॉम्पिटेंसी, बार, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, जो सीपीसी के अंदर जो बार दिए हुए हैं वो देखने पड़ते हैं, क्योंकि सीपीसी तो बार नहीं कर रहा है. ये सब देखने के बाद नाउ फाइनली यू हैव कम टू अ कोर्ट जिसमें कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है. ये सारी चीजें फिल्टर, इन सब ने फिल्टर कर दिया है कि ये यहां पे नहीं, यहां पे, यहां पे नहीं, यहां पे. नाउ यू हैव कम, फाइनली यू हैव कम टू द कोर्ट जहां पे यू विल इंस्टीट्यूट द सूट, यू विल फाइल द सूट. Okay, now you have come to the right court, but you have no idea that how to institute the suit. आप सही न्यायालय में तो आ गए हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि एक सूट को इंस्टीट्यूट कैसे कराना है. You have no idea that how to institute the suit. कि सूट को इंस्टीट्यूट कैसे कराना. For this, read section 26 with order 4. सेक्शन 26 को ऑर्डर 4 के साथ पढ़ें. सेक्शन 26 रीड विद ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 के साथ पढ़ें. They both talk about the institution of suit. That a suit shall be instituted by presenting a plaint. एक सूट को प्लेंट को प्रेजेंट करके इंस्टीट्यूट किया जा सकता है. A suit shall be instituted by presenting
by presenting a plaint. एक प्लेंट को प्रेजेंट करके आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ प्लेंट. प्लेंट क्या होता है? प्लेंट इज एक्चुअली अ पिटीशन इन व्हिच द पार्टीज हैव बीन एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1 ऑफ CPC. It has been framed according to order 2 of CPC, which says frame of suit, and order 1 says parties to suit. And the general pleadings, the principles of general pleadings which are given under order 6 have been complied with, and plaint, the rules of plaint which are given under order 7 have also been complied with. आपने जो पार्टी सूट में ऐड करी है वो ऑर्डर 1 के अकॉर्डिंग ऐड करी है, which talks about parties to suit, जो कि parties to suit के बारे में बात करता है. Who may be joined as a plaintiff, who may be joined as a defendant, necessary parties और बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं ऑर्डर 1 में parties to suit. Order 2 which talks about the frame of suit, causes of actions को अगर आपने different causes of action है तो so the joinder of causes of action वहाँ पे दिया हुआ है. A suit to include the whole claim, एक सूट के अंदर सारा का सारा क्लेम आपको इंक्लूड करना है. वो सारे रूल्स कहाँ दिए हुए हैं? ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बात करता है. ऑर्डर 6 which contains the principles of general pleadings, that बहुत सारे उसमें प्रिंसिपल्स हैं ऑर्डर 6 में जनरल प्लीडिंग्स के, कि प्लीडिंग में क्या होना चाहिए. इट मस्ट बी कंसाइज, a pleading must contain only the material fact and not evidence. इस तरीके की चीजें वहां पे आपने उनको भी कंप्लाई किया है ऑर्डर 6 के प्रिंसिपल्स को भी. एंड ऑर्डर 7 which is plaint, which talks about plaint, that are particulars to be contained in plaint, कि प्लेंट के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर्स आने हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें दी हुई हैं. तो ऑर्डर 7 को भी आपने कंप्लाई किया है. एंड देन यू हैव ड्राफ्टेड योर प्लेंट. ये सारे ऑर्डर्स को आपने और इनके अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको आपने फॉलो करते हुए, उनको आपने कंप्लाई करते हुए यू हैव ड्राफ्टेड योर प्लेन. इट मींस आपने एक अच्छा प्लेन, एक सही प्लेन ड्राफ्ट किया है. सो अ पिटीशन in which the parties have been added according to order 1, and these all orders, order 1, order 2, order 6 and order 7 have been complied with. एक पिटीशन में जिसमें कि आपने इन सब ऑर्डर्स को कंप्लाई किया है, उनको फॉलो किया है, पार्टीज को उसके अकॉर्डिंग ऐड किया है, क्लेम्स को भी कंप्लीट ऐड किया है, वो सारी चीजें आपने जनरल प्लीडिंग्स के रूल्स को कंप्लाई किया है. तो अगर आपने ऐसा किया है, सो दैट पिटीशन विल बी कॉल्ड एज अ प्लेंट. उसको प्लेंट बोला जाता है. राइट नाउ आपने इन सबको कंप्लाई करने के बाद प्लेंट अपना ड्राफ्ट कर लिया है, एंड यू हैव प्रेजेंटेड दैट प्लेंट इन द कोर्ट. सो इट मींस you have instituted the suit, because order 4 read with section 26 कहता है that a suit shall be instituted by presenting a plaint, or every suit shall be instituted by presenting a plaint. यहाँ पर a suit नहीं आएगा, it will be every suit shall be instituted by presenting a plaint. ठीक है, तो आपने इस प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया है कोर्ट में, तो इसका मतलब है कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है. आपने तो इंस्टीट्यूट कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल द ऑपोजिट पार्टी, कि दूसरी पार्टी को बुलाया जाए. अभी कॉल द ऑपोजिट पार्टी, जिसको आपने डिफेंडेंट बनाया है उसको बुलाया जाए. अब उसको बुलाएंगे कैसे? समन्स. उसको क्या जाएंगे? समन्स. समन्स कहां पे दिए हुए? सेक्शन 27, 28, 29, रीड विद ऑर्डर 5. सेक्शन 27, 28, 29 को आपने ऑर्डर 5 के साथ पढ़ना है, तो वहां पे समन्स दिए हुए हैं. राइट, अभी समन्स हो गए हैं डिफेंडेंट को. तो हियर टू थिंग्स मे हैपन. दो चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट, दैट द डिफेंडेंट विल appear in the court, or he will not appear. या तो डिफेंडेंट आएगा या फिर डिफेंडेंट नहीं आएगा. Now, if the defendant will appear, so he will file his defense in the form of written statement. तो अगर आया है तो अपनी written statement फाइल करेगा, and in this written statement he can file a counter claim or a set off. काउंटर क्लेम और सेट ऑफ भी मांग सकता है उस रिटर्न स्टेटमेंट में. वो डिफेंडेंट आ गया, आपने समन्स उसको भेजे थे कोर्ट के थ्रू, और वो आ गया है. दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 8.
ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम और ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर नहीं आता है then under order 9 appearance of parties and consequences of non appearance दिया हुआ है। appearance of parties and consequences of non appearance and consequences of non appearance। पार्टी अगर आती है तो उसका क्या होगा और अगर नहीं आती तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑर्डर 9 में डिसमिसल ऑफ सूट हो सकता है वहां पे, राइट। नाउ इफ द डिफेंडेंट विल अपीयर, और तो वो क्या खुद को, उसको डिफेंडेंट को खुद ही आना है या फिर उसके अलावा कोई और भी आ सकता है। सो फॉर दिस रीड ऑर्डर 3, आप ऑर्डर 3 पढ़ लीजिए जिसमें कि द डिफेंडेंट हिमसेल्फ कैन कम और हिज प्लीडर और रिकग्नाइज्ड एजेंट भी आ सकता है। रिकग्नाइज्ड एजेंट, प्लीडर या वो खुद भी आ सकता है, राइट। नाउ यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द कोर्ट हैज नॉट कम इनटू पिक्चर सो फार। अभी तक कोर्ट की कोई भी भूमिका नहीं हुई है, कोर्ट अभी तक कहीं पे भी नहीं आया है। नाउ हियर द कोर्ट विल कम। अभी डिफेंडेंट आ गया है, लेट्स सपोज द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, द प्लेंटिफ इज देयर। तो उसमें क्या होगा, प्लीडर्स भी हैं, लॉयर्स हैं, तो नाउ क्या होगा, नाउ अंडर ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करेगा। आप किस तरीके से एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बाय रीडिंग द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, उनकी प्लीडिंग्स को पढ़ के, and by asking questions to the parties, right, by reading pleadings or by asking questions to the parties, right. So the examination of parties will be done by the honorable court under order 10। अभी यहां पे भी दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट, इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ADR इज पॉसिबल। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकता है, मतलब सेटलमेंट हो सकता है। इट अपीयर्स टू द कोर्ट, इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट ADR इज पॉसिबल। ADR इज पॉसिबल। केस में ADR पॉसिबल है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉसिबल है, तो इसको आप मीडिएशन में या फिर आप इसको लोक अदालत में या फिर इसको सेटलमेंट के लिए आप भेज दीजिए। तो उस केस में उसको ADR के लिए भेज दिया जाएगा मैटर को, या फिर कोर्ट को लगता है इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द प्लीडिंग्स आर नॉट क्लियर, प्लीडिंग्स आर नॉट क्लियर। Now, when the court will examine the parties by reading their pleadings and by asking the questions to the parties, so what exactly the court is trying to do? The court is trying to make up its mind. The honorable court is trying to make up its mind so that the framing of issues can be done. कि क्या issues हैं इनके बीच में, उनका framing of issues करना होता है, then the trial begins, और वहां से trial शुरू होता है। एग्जामिनेशन करके पार्टीज का under order 10 by reading the pleadings of the parties and by asking the questions from the parties, the court is trying to make up its mind so that the framing of issues can be done. Court अपना दिमाग, court is trying to make up its mind. Court कोशिश कर रहा है ये बात निकालने की कि इनके बीच में actual conflict of interest है क्या, dispute है क्या, जिसके according framing of issues हो सके, right? तो कोर्ट ने देखा कि प्लीडिंग्स क्लियर नहीं है, या फिर द ऑपोजिट पार्टी इज क्लेमिंग that he has concealed some material fact or some material evidence from this honorable court, कि ये जो प्लेटिफ है इसने कुछ मटेरियल एविडेंस या फिर कुछ मटेरियल फैक्ट कंसील किया है, हाइड किया है ऑनरेबल कोर्ट से। तो द पार्टी is claiming that he has
He means the opposite party. He means the opposite party. He has concealed some material, fact or evidence from this honorable court. या तो कोर्ट को लगता है the pleadings are not clear, pleadings clear नहीं है, the court is not able to make up its mind कि भैया ये pleadings आपने जो फाइल करी है इससे पता नहीं चल रहा है कि आपके बीच में डिस्प्यूट क्या है, आप क्या चाहते हो। या फिर दूसरी पार्टी बोल रही है कि इसने कुछ मटेरियल फैक्ट या मटेरियल एविडेंसेस को छुपाया है। इस केस में, इन दो केसेस, इन दो सिचुएशंस में क्या होगा? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, जिसमें कि इंटेरोगेटरीज भी आ जाती हैं। ऑर्डर 11 के अंदर, ऑर्डर 11 के अंदर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन हो सकता है। यहां पे एडमिशन भी हो सकता है। आपने कुछ एडमिशंस कर लिया है, एडमिशन कर लिया है, आपने किसी चीज को, किसी एलिगेशन को आपने एडमिट कर लिया है, सो इन दैट एडमिशन भी हो सकता है। ऑर्डर 12 में, ऑर्डर 12 के अंदर एडमिशन हो सकता है। एंड द फैक्ट दैट यू हैव एडमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। जो चीज आपने एडमिट कर ली है, जो एलिगेशन आपने एडमिट कर लिया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। रेलेवेंट सेक्शंस आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट कि आपने जो एडमिट कर लिया है इसका मतलब है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एडमिशंस भी हो सकता है। अभी क्या है, आपने इंटेरोगेटरीज, आपने डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करा लिया है, आपने एडमिशंस को देख लिया, कोई एडमिशंस तो नहीं है। अभी क्या, देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन अ सूट। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं सूट के अंदर, राइट? सो द डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं किसी भी सूट में, उनका प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज गिवन अंडर ऑर्डर 13। प्रोडक्शन, impound and return of documents। उनको प्रोड्यूस करना है, उनको रिटर्न करना है, इंपाउंड करना है, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13, ऑर्डर 13 में आ जाता है। वो कर लिया आपने, ये सब हो गया है। नाउ द ट्रायल विल बिगिन। अभी ट्रायल शुरू होगा। अब क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, द कोर्ट विल फ्रेम द इश्यूज। क्रिमिनल केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है और सिविल मैटर्स में, सिविल सूट्स में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14, ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है, राइट? अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, that it appears to the court that this matter can be disposed of at the first hearing only, disposal of suit at the first hearing, disposal of the suit at first hearing, order 15, order 15 में कि कोर्ट को लगता है कि ये तो मैटर ऐसा है, इसको एक ही डेट पे, फर्स्ट हियरिंग पे इसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो ऑर्डर 15 भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट? नाउ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया है, तो अब क्या करेगा कोर्ट? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया है, नाउ विटनेसेस को बुलाया जाएगा। समन्स टू द विटनेसेस, गवाही करी जाएगी, विटनेसेस को बुलाया जाएगा। समन्स टू द विटनेसेस, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी रीड विद ऑर्डर 16, ऑर्डर 16 के साथ आप सेक्शन 31 और सेक्शन 32 को पढ़ लीजिए, समन्स टू विटनेसेस। एंड इफ द विटनेस इज इन प्रिजन, अगर जेल में है विटनेस, तो ऑर्डर 16A कैपिटल को आप देख लीजिए, ऑर्डर 16A कैपिटल को आप देख लीजिए। आपने विटनेसेस को समन कर दिया है, विटनेसेस आएंगे। अभी क्या हो सकता है?
that the witness is saying that he cannot come, he cannot appear to the court, he cannot, turn up in the court due to certain problem. गुड कोज वो दे देता है कोर्ट को कि मेरे को ये समस्या है, आई कैन नॉट कम टू द कोर्ट. तो उस केस में क्या होगा? वो बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ और ये देख लीजिए मैं बहुत ज्यादा सीवियरली इल हूँ एंड आई कैन नॉट कम टू द कोर्ट. सो उस केस में क्या होगा? विटनेस कैन नॉट कम टू द कोर्ट and he has shown a sufficient cause. Sufficient cause उसने दिखा दिया है कोर्ट को. So उस केस में क्या होगा? Commissions will be sent. Commissions. Section 75 to section 78 read with order 26. ऑर्डर 26 के साथ आप सेक्शन 75 से सेक्शन 78 देख लीजिए. कमीशन से कमीशंस भेजे जाएंगे ना. कमीशंस कई सारी चीजों के लिए भेजे जाते हैं. कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन जाता है. कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन जाता है. कमीशन टू एग्जामिन द अकाउंट्स के लिए भी कमीशन जाता है. इन सब चीजों के लिए कमीशन जाता है और विटनेसेस के लिए भी कमीशन जाएगा. सो आपने कमीशन भेज दिया. विटनेसेस, अब विटनेस भी आ गए हैं, पार्टीज भी आ गई हैं, प्लीडर्स भी हैं. नाउ witnesses, parties, pleaders, everyone is before the honorable court. Everyone is there in the court. हर कोई कोर्ट में है. अब क्या होगा? Let's suppose now the pleader, the lawyer is saying that he is not feeling well and he seeks adjournment from the honorable court. वो कह रहा है कि either he is saying that he is not prepared with the case or he is not feeling well, he is ill and he seeks the adjournment from the honorable court. तो प्लीडर बोल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज आर्गुमेंट्स नहीं कर सकता हूं या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो वो एडजर्नमेंट मांग सकता है. एडजर्नमेंट्स ऑर्डर 17, ऑर्डर 17 के अंदर एडजर्नमेंट्स हो सकते हैं. अभी एडजर्नमेंट्स कुछ अभी नेक्स्ट, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आप उस दिन आइए सारे के सारे. नाउ ऑन दैट डे pleader is there, parties are there, witnesses are there, and no adjournment is sought by the pleaders. कोई adjournment नहीं मांगा है. अब क्या होगा? Now order 18, order 18 में examination in chief, cross examination, and if it is required then re-examination as well. ये सब होगा, and this is called the actual proceedings which happen in the court. अभी यहां तक हमें समझ में आ गया है कि पहले आपको देखना है कि कौन से कोर्ट कहां जाएं, where to go, where to institute the suit, which is a competent authority. So आपने देखा under section 15, a lowest competent court, in a lowest competent court you have to institute your suit. Now pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction, subject matter jurisdiction, and all the bars of section which are given in section like which the section 9 says, express and implied bar, and the bars which are given in the CPC also, section 10, section 11, section 14, order 2 rule 2, order 9 rule 9, order 22 rule 9, order 23 rule 1,
ये सारी चीजें आपने क्लियर करने के बाद आप सही कोर्ट के पास पहुंचते हो, वहां पे आपको पता चलता है that a suit shall be instituted by presenting a plaint. एक प्लेंट के द्वारा एक प्लेंट को प्रेजेंट करके you can institute a suit. Now प्लेंट क्या होता है? Order 1, Order 2, Order 4, sorry Order 6, Order 7 के अकॉर्डिंग आपने प्लेंट को ड्राफ्ट कर दिया. The parties have been added according to Order 1. Frame of suit, Order 2. Principles of general pleading, Order 6. Plaint, Order 7. You've complied all these rules given in these orders and you have drafted a plaint. आपने plaint ड्राफ्ट कर लिया. उसके बाद ये सारी चीजें आपने देखी कि क्या क्या हो सकता है. एडमिशंस हो सकते हैं, डिस्कवरीज एंड इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, एडजमेंट्स हो सकते हैं, और कहीं और फिर ये सारा सब कुछ होने के बाद कहीं जाके आप एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन ये सब चीजें कर सकते हो. गवाही हो सकती है, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, समन्स भेजे जाएंगे. विटनेस बोल देता है दैट आई कैन नॉट कम टू द कोर्ट. कमीशंस आपने करवाए ऑर्डर 26 में. तो ये सारी चीजें होती हैं. नाउ देखते हैं इसके बाद इसके आगे और क्या है, क्या होता है इन सिविल सूट. Okay, so now you have done the examination in chief, cross examination, and if it is required, the re-examination also. Now under order 18, right? Order 18 में examination in chief, cross examination, और अगर जरूरत पड़ी तो re-examination भी किया जा सकता है. Now एक बार order 19 को भी देख लेते हैं. Order 19 को भी देख लेते हैं. Order 19 talks about affidavits. Affidavits, and there is a very important thing given in order 19. एक बहुत important चीज दी हुई है order 19 में, that evidence by affidavit, evidence by affidavit without calling the witness. Evidence by affidavit without calling the witness. विटनेस को बिना बुलाए आप उसके एफिडेविट से ही एविडेंस ले सकते हैं. Obviously there are conditions given in order 19, but the Indian Evidence Act says that affidavit cannot be an evidence. Indian Evidence Act कहता है कि affidavit एविडेंस नहीं होता है. It is not an evidence. Right? तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, but order 19 CPC में हम आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है. सो यहाँ पे रेफरेंस था, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. नाउ द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस हैव बीन डन. अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज द जजमेंट एंड डिक्री. जजमेंट एंड डिक्री. फॉर दिस order 20, read with section 33. section 33 आप देख सकते हैं order 20, order 20 judgment and decree के बारे में बात करता है. Right? Now in the decree there can be costs as well. cost भी हो सकती है वहां पे. order 20 A capital आप देख लीजिए इसके लिए, and read with section 35, section 35A and section 35B. General cost, compensatory cost and section 35B cost for causing delay. cost भी उसके अंदर हो सकती है. ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सब पे लेक्चर्स हैं. राइट? अब जजमेंट एंड डिक्री order 20 सेक्शन 33 के साथ आपने देख लिया, और उस डिक्री के अंदर कोस्ट भी हो सकता है. order 20 A कैपिटल, B A कैपिटल, सेक्शन 35, 35A, 35B, ये सब है. अब क्या? Now you have got the decree in your favor, then what will you do? You will go in the execution of that decree. No? Execution of the decree. तो आप execution में जाएंगे. order 21, order 21, और मैंने शुरुआत में आपको बताया था that order 21 is the largest order of CPC. It contains 106 rules into it. 106 rules हैं order 21 में. राइट? सो आप एग्जीक्यूशन में चले गए और आपने डिग्री को एग्जीक्यूट करा दिया.
ये जब एग्जीक्यूशन हो गया है तो आपका सूट का डिस्पोज, मतलब ऑब्वियसली द डिक्री जजमेंट तो आ चुकी है, अब आपने जो डिक्री आपके फेवर में आई है उसको एग्जीक्यूट भी करा लिया है, बट ड्यूरिंग ट्रायल, व्हेन द ट्रायल वाज पेंडिंग, व्हेन द सूट वाज पेंडिंग, ड्यूरिंग ट्रायल कुछ एक चीजें हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूं. ड्यूरिंग ट्रायल, when the suit was pending. Now ये तो मैंने बता दिया कि जजमेंट एंड डिक्री आ गई है, उसका एग्जीक्यूशन आप करा सकते हैं. बट when the trial was going on, when the trial was pending, during trial, उस दौरान क्या क्या चीजें हो सकती है? Now उस दौरान डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी हो सकती है, ऑफ पार्टीज हो सकती है. ऑर्डर 22, ऑर्डर 22 के अंदर है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, विड्रॉवल, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट ऑफ सूट हो सकता है. ऑर्डर 23, ऑर्डर 23 के अंदर पेमेंट इनटू कोर्ट हो सकती है, पेमेंट इनटू कोर्ट हो सकती है, दैट इज ऑर्डर 24. ऑर्डर 24 में सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट हो सकती है, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट हो सकती है. ऑर्डर 25 में, ऑर्डर 25 में ये सारी चीजें हो सकती हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, व्हेन द ट्रायल वाज गोइंग ऑन, जब आपका ट्रायल चल रहा था, ड्यूरिंग द ट्रायल. इनके साथ साथ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती है ड्यूरिंग ट्रायल, एंड सम ऑफ द सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कैन बी in the execution of the decree also, can be done in the execution of the decree also. Supplemental proceedings, supplemental proceedings. तो supplemental proceeding section 94 and section 95 आप पढ़ लीजिए, जिसमें कि ऑर्डर 38 अगर आप देखेंगे, ऑर्डर 38, देन अरेस्ट एंड अटैचमेंट दिया हुआ वहां पे, अरेस्ट एंड अटैचमेंट हो सकता है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ डिफेंडेंट की बात यहाँ पे हो रही है. ऑर्डर 39 अगर आप देखेंगे, ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर 39, देन देयर इज टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन हो सकता है वहां पे, राइट. ऑर्डर 40 अगर आप देखेंगे, दिस इज 40, देन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये सब चीजें हो सकती है. These are called supplemental proceedings. इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, ये सब चीजें हो सकती है. Now you have got the decree in your favor and you filed an application for the execution of the decree under order 21 of the CPC. अब क्या हो सकता है? अपील भी हो सकती है उसकी, अपील भी हो सकती है, राइट, अपील्स. So अगर आप अपील देखोगे in CPC, if you will see appeals in CPC, so there are five types of appeals given in CPC. Part 7 of CPC, section 96 to section 112. Part 7 of CPC contains section 96 to section 112. अपील के बारे में बात करते हैं. So there are 5 types of appeal. First appeal. First appeal means appeals from the original decree. Appeals from the original decrees.
section 96 to section 99 A capital and read with order 41, order 41 के साथ आप इसको पढ़ लीजिए. फर्स्ट अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. सेकंड अपील, appeals from appellate decrees, section 100 to section 103. Read with order 42, order 42 के साथ इसको आप पढ़ लीजिए. section 100 to section 103. Appeals from orders. Third is appeals from orders. Even though orders are not appealable, but there are certain orders which are appealable. Generally, orders are not appealable. Generally, जो orders होते हैं वो appealable नहीं होते. But there are certain orders which are appealable. For that, you can read section 104 to section 106 and read it with order 43, order 43 के साथ आप इसको पढ़ लीजिए. Fourth is the appeals by indigent persons. Appeals by indigent persons. So order 44 is there. Order 44 is there. Order 44 है यहाँ पे. And the fifth one is appeals to Supreme Court. Appeals to Supreme Court. Section 109, section 110, 111 and 111A capital, they have been repealed. इनको repeal कर दिया गया, right? So section 109 is there in section 112 is there. Section 112 is savings. तो इसके साथ आप पढ़ लीजिए order 45 को. So these are the 5 appeals जो कि CPC में दी हुई हैं. First appeal, which is the appeals from the original decree, section 96 to section 99 A capital. Part 7 में सारी चीजें दी हुई हैं. Section 96 to section 112. First appeal, second appeal, appeals from orders, appeals by indigent persons, and appeals to Supreme Court, section 109, and then there is section 112 is also there, savings. Now read it with order 45. Appeals हो सकते हैं. इनके अलावा क्या हो सकता है? इनके अलावा, if you will go to part 8, part 8 of CPC में अगर आप जाओगे, so you will see reference to High Court. Please remember, reference to High Court होता है. Reference, review and revision. Reference, review, revision हो सकता है. Reference is section 113, review is section 114, and revision is 115. 113 में रेफरेंस है, 114 में सेक्शन 114 में रिव्यू है और रिवीजन 115 है. ना रेफरेंस को आप पढ़ लीजिए ऑर्डर 46 के साथ, ऑर्डर 46 के साथ, एंड रिव्यू रीड इट विद ऑर्डर 47, ऑर्डर 47 के साथ आप पढ़ लीजिए. So this is the entire CPC जो कि इस तरीके से काम करती है. मैंने बताया कि you must have a cause of action, means a violation of your civil right. You have a civil right and it has been violated by another person. You've got a right to file a suit against that person who has violated your civil right. You've got a right to institute or to initiate the civil proceedings against that person who has violated your civil right. Then you can move to the court. Then you have to see that to which court you have to move. So the relevant sections you can see, the provisions have told you कि ये sections हैं. वो सारा कर आके आप
ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ that CPC can be divided. Now यहाँ पे एक और बार हम CPC को डिवाइड कर सकते हैं just to understand, सिर्फ समझने के लिए, that ordinary CPC, that your ordinary rules जो आम है, ordinary, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताए, and special orders. Order 27 to order 37. Order 27 to order 37 आप देखोगे तो वो स्पेशल ऑर्डर्स हैं। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी बिकॉज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और शायद हो सकता है आप बोर हो जाओ इसको देखते देखते। Order 27 suits by or against government. Order 37 summary procedure, summary suit. So this was the crux, this was the the short tour of CPC, even though it was not a short tour, but इससे short में नहीं हो सकता था इतना, because CPC is a vast subject, बहुत बड़ा subject है। मैंने आपको शुरुआत में बताया that it is not a complicated subject, it's quite a simple subject, but it's a big subject, it's a large subject, बहुत बड़ा subject है CPC। अभी आगे मैं स्पेशल ऑर्डर्स को बताने लग जाऊंगा, ऑर्डर 27 टू ऑर्डर 37, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यू कैन सी इट ऑन योर ओन। हम ऑब्वियसली विल डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आउट ऑफ दिस स्पेशल। ऑर्डर 27 भी हम करेंगे, ऑर्डर 37 भी करेंगे, इसी बीच में जो भी कुछ आएगा विल डू एवरीथिंग, ठीक है। नाउ एक बार इंटरप्रिटेशन ऑफ CPC भी देख लेते हैं। What are the rules of interpretation of CPC? Liberal interpretation or literal interpretation? ठीक है, ये एक और देख लेते हैं। After that, the basics of CPC would be over, और आपको एक ओवरव्यू मिल गया है, एक समअप मिल गया है कि CPC को किस तरीके से पढ़ना है, उसमें किस तरीके से प्रोसीडिंग्स शुरू होती है और किस तरीके से प्रोसीडिंग्स को डिसीजन तक पहुंचाया जाता है, सूट को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, प्लेट क्या होता है और बहुत सारी चीजें, राइट। एक बार रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और थोड़े से कुछ नोट्स हैं उसको भी देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट विल बी ओवर विद द बेसिक्स ऑफ CPC, द इंट्रोडक्शन ऑफ CPC rather, instead of saying basics of CPC, the introduction of CPC. Okay, so we have already discussed the object of CPC, but एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया the object of CPC is to serve the ends of justice and to bring about a proper harmony in the conflict of interest of the individuals. उसके साथ साथ I also told you that the preamble of the CPC says that the object of CPC is to consolidate and to amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature, right? एक बार नोट्स की हेल्प से भी इसको थोड़ा और समझते हैं। The purpose of CPC is to make complementarity with the substantive laws. Complementarity with the substantive laws and to make the maxim ubi jus ibi remedium effective. To make the maxim ubi jus ibi remedium effective and to make complementarity with the substantive law. Substantive law are the laws which determines the rights and the liabilities of the parties, the legal rights, the liabilities of the parties. हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। Ubi jus ibi remedium means where there is a right, there is a remedy. Now there are many Latin maxims जो कि purpose या object of CPC को कहीं ना कहीं बताती हैं। For example, audio altrum partem, a right of fair hearing, जिसका मतलब होता है ex debito justitiae, which means in the interest of justice, actus curiae neminem gravabit, which means that the act of court will not prejudice anyone. These are certain maxims which are somewhere related to the object or the purpose of CPC, right? Audio altrum partem, actus curiae neminem gravabit, this ubi jus ibi remedium, and this ex debito justitiae, which I just told you. So ये सारी maxims, Latin maxims कहीं ना कहीं object of CPC से related हैं और आप उनको इन maxims को अपने आंसर में रेफर कर सकते हैं। Ubi jus ibi remedium, which means it means where there is a right, there is a remedy. If you have a right, and if there is no proper mechanism or a proper procedure to enforce that legal right, so that right would be meaningless. It would be a futile right. उसका कोई मतलब नहीं होगा ऐसे राइट का जिसके लिए कोई रेमेडी नहीं है,
right? So the ubi just ibi remedium means where there is a right, there is a remedy. This remedy must be an effective and enforceable remedy. ये जो रेमेडी आपके पास है ये एक इफेक्टिव और एनफोर्सेबल रेमेडी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ यूजलेस रेमेडी. एंड हाउ कैन इट बी एन इफेक्टिव and enforceable remedy? With the help of a procedural law. This remedy which has been given to you by the substantive law, the procedural law gives the mechanism, gives the procedure, enforces this remedy that you have and makes it an effective remedy. और इसको एक effective remedy बनाता है क्योंकि इसको enforce कराने का पूरा procedure ही आपको बता देते हैं. And the mentioned above, the purpose of CPC is to provide complementarity or the mechanism to the remedy one has, right? CPC provides the procedure in case of violation of a legal right, and it is that procedure which makes the legal rights effective. This procedure which is provided by the CPC, because CPC is a procedural law, and to a certain extent we can say for PT के लिए अगर PT में क्वेश्चन आता है whether CPC is a private law or a substantive law, so it is a private law. Right? A private law or a public law, not a substantive law. Substantive and procedural law में आता है तो procedural law है, and private and public law में आता है तो it is a private law, right? Because it deals or it regulates or it governs the relations of the individuals. मैं आपसे पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें आपको. CPC provides the procedure in the case of violation of the legal right, means civil right, a right which has been conferred by the law. जो कि कानून ने आपको अधिकार दिया है, उस राइट का अगर वायलेशन होता है, then the CPC provides you a remedy to enforce that right which has been violated by another party, another person. So CPC provides the procedure in case of violation of a legal right, and it is that procedure which makes the legal right effective. और ये procedure ही है जो इस right को effective बना देता है, इस right को enforce कराता है. So another dimension of CPC. One dimension of CPC is that it brings about a balancing of interest. It brings about a proper harmony in the conflict of interest of the individual. Balancing of interest करता है CPC. In the conflict between the individuals and the purpose, conflict of interest between the individuals. Conflict of interest between the individuals, and the purpose of CPC is to harmonize the conflict by deciding in a case as to who is the wrongdoer and declaring the right and the relief accordingly. At the same time, CPC has a larger public policy involved, that is, to bring about the stability in the legal relations in the society and to prevent any societal chaos which may occur due to the conflict between the individuals. अगर individuals के बीच में जो dispute है, उनके बीच में जो conflict of interest है, अगर उसको solve नहीं करा गया, तो उससे क्या होगा? To a larger extent, it would result into a societal chaos. एक societal chaos, एक societal mess हो जाएगा. Because कुछ individuals का यहाँ पे, because society is what? Society is the group of all the individuals. बहुत सारे individuals मिलके एक society को बनाते हैं, right? And if there is a conflict of interest of individuals, then to a larger extent it would result into a societal chaos, और इससे एक societal chaos आ जाता है. So at the same time, CPC has a larger public policy involved, that is to bring about the stability in the legal relations in the society. Society के legal relations में भी stability लाता है CPC by providing a proper mechanism, by enforcing your legal right, by enforcing the legal duties which have been provided by the substantive law, and to prevent any societal chaos which may occur due to the conflict between the individuals, और जो individuals के बीच में जो इनके interest of conflicts होते हैं, उसकी वजह से जो societal chaos होने के chances होते हैं, उसको भी CPC prevent करता है, CPC रोकता है. The main principle that governs CPC is the furtherance of ends of justice. So this is the main principle, furtherance of ends of justice. To further the ends of justice, to serve the ends of justice, in the interest of justice, to prevent the ends of justice from being defeated. ये सारे main principles हैं. Principles of natural justice, principles of equity, justice and good conscience. These are the basic features of our constitution. ये हमारे संविधान के basic features हैं. And that is why these principles are there in the CPC also. In the interest of justice, to further the ends of justice, to serve the ends of justice,
जस्टिस को सर्व करना है, न्याय करना है, रेमेडी को इन्फोर्स करा, रेमेडी प्रोवाइड करानी है, जो आपका लीगल राइट है उसके अगर वायलेशन हो जाता है उसके लिए तो so this is what the purpose of CPC. The main principle that governs CPC is the furtherance of ends of justice in every case. Furtherance of ends of justice, right? Or I told you that the preamble of the CPC also says that the object of CPC is to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature. Amend करना है और consolidate करना है. Consolidate means to make solid, to make firm, मजबूत करना है. Procedure of civil courts. Laws relating to the procedure of civil judicature. Civil courts के जो procedure है उसके laws को consolidate करना और amend करना है. Amend करना है मतलब with the passage of time जो नई नई चीजें आती हैं उनके साथ किस तरीके से कॉप अप करना है उनको, तो वो सारी चीजें भी उनके लिए भी अमेंड करके उनके लिए प्रोविजंस बनाना है. सेक्शन 151 इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स मैं आपके साथ पहले से डिस्कस कर चुका हूं. सेविंग ऑफ इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ द कोर्ट. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent parts of the code to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the court. Ends of justice के लिए, justice के लिए, in the interest of justice, अगर कोई order pass करना है तो inherent powers में court under section 151 कर सकता है और उसको CPC नहीं रोक सकता है. Or to prevent the abuse of the process of the court. और जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है उसका अगर अब्यूज हो रहा है, उसका अगर उसको अगर मिसयूज हो रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है इनहेरेंट पावर्स में. अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है सीपीसी में, सो the court, the civil court can use its inherent powers. Every civil court has an inherent power under section 151. Unlike the criminal code, in which only the high courts have the inherent powers, section 482 of CrPC. Right? So the main principle that governs CPC is the furtherance of ends of justice in every case. Another governing principle of CPC would be the principle of audi alteram partem, the right of fair hearing, that both parties have a right of being heard. दोनों parties को सुना जाना चाहिए. Even though ex parte decrees का CPC provides a procedure, ex parte decrees भी हो सकती है, but उसके लिए conditions है. ठीक है? In the interest of justice, in the CPC anything can be done. So another, because why I'm saying that in the interest of justice anything can be done in the CPC के CPC में न्याय के लिए कुछ भी किया जा सकता है, in the interest of justice, to further the ends of justice, to serve the ends of justice, because CPC is a procedural law, and procedure is said to be procedure is considered to be the handmaid of justice. Procedure is considered to be a handmaid of justice, and no procedural law can be allowed to defeat the ends of justice. Procedure को handmaid of justice consider किया जाता है. This is the line of the apex court. The Honorable Supreme Court has used this line that procedure is considered to be a handmaid of justice, and no procedural law can be used to defeat the ends of justice. Procedural law को allow नहीं किया जा सकता कि उसकी वजह से ends of justice defeat हो जाए, उसकी वजह से अन्याय हो जाए. A hyper-technical view cannot be adopted by the courts in interpreting the procedural laws. Procedural laws जो होते हैं, just like CPC, Indian Evidence Act, CrPC, Limitation Act, इनको interpret करते हुए a hyper-technical view cannot be adopted by the courts. बिल्कुल एक literal approach नहीं apply करी जा सकती, adopt करी जा सकती courts के द्वारा कि जैसा लिखा है वैसा ही किया जा सकता है. But if the ends of justice defeat होते हैं अगर उससे little interpretation से कि जैसा लिखा है वैसा ही अगर माना है, hyper technical view अगर लिया जाता है, तो if it defeats the ends of justice, then the court cannot adopt the little interpretation of that provision. If it is a prohibitive provision or a restrictive provision, CPC has provided a restrictive or a prohibitive provision. But in the interest of justice, if it defeats the ends of justice, then that prohibitive or the restrictive provision can be read as a directive provision only. A direct provision. सिर्फ उसको एक directive provision की तरह भी पढ़ा जा सकता है in the interest of justice. Because procedural law or a procedure is the handmaid of justice, and no procedural law can be
allowed to defeat the ends of justice. Hyper-technical view नहीं लिया जा सकता है. Otherwise, interest of justice defeated. Procedure is considered, now ये आ गया यहाँ पे. Procedure is considered to be the handmaid of justice. ये सारी चीजें, these are the ornamentations which have been, fetched from the various judgments of the Honorable Supreme Court. These are the terms which have been used by the Honorable Apex Court of the country, and if you will use these terms, these kind of lines in your answer writing, in your answers in the mains, definitely, certainly, it's going to give you an edge, an advantage as compared to the other students who haven't used such ornamentations, such terms, such lines which have been used by the Honorable Supreme Court in its various judgments. आप इस तरीके की लाइंस को, इस तरीके की टर्म्स को अगर अपने मेंस में आंसर में लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसकी एडवांटेज मिलेगी as compared to the other students who are not using such terms or such lines, such excerpts of the various judgments of the Honorable Supreme Court. So the procedure is considered to be the handmaid of justice, and no procedure can be applied without the principle of justice, and no procedure can be applied without the principle of justice. A procedural law cannot be allowed to defeat the ends of justice. Principle of equity, justice and good conscience, natural justice, principle of natural justice are the part of the basic structure of the constitution. Therefore, they have to be found to be implicit in the CPC and any other law as well, because these are the basic features of our constitution. Principles of equity, justice and good conscience, principle of natural justice, that both parties have a right of being heard, or the original partner, in the interest of justice, ex capito justitiae. Right? So, actus curiae neminem revivit. The act of court will not prejudice anyone. So these are the parts of the basic features of the constitution. Principle of equity, justice and good conscience. और ये CPC में implicit है, and these are implicit in other laws as well. So CPC regulates, CPC governs the relations and also balances the conflict of interest between the individuals, and therefore in this sense CPC is a private law. But to a larger extent, or to the societal interest, it is a public law, because it prevents the societal chaos. अगर PT में क्वेश्चन आता है that CPC is a private law, तो आप क्या लिखोगे और किसको टिक करोगे? Whether CPC is a private law or a public law, both or none of the above, so you will take on the private law, that CPC is a private law. But अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो and you have to mention this thing, that whether CPC is a public law or a private law, तो आप इस तरीके से लिखोगे. That to a larger extent, CPC is a public law because it prevents the societal chaos by bringing about a harmony in the conflict of interest of the individuals. CPC regulates, or CPC governs the relations and also balances the conflict of interest between the individuals. Therefore, in this sense, CPC is a private law. But to a larger extent, to the societal interest, it is a public law. CPC is a public law to a larger extent. But because it governs or it regulates the relations of the individuals, so it is a private law. PT के लिए it's a private law. For mains, आप इसको private law भी बताएंगे, and to a larger extent, आप इसको societal interest में इसको आप public law भी बताएंगे. Now the rule of interpretation of CPC: literal interpretation and liberal interpretation. Literal interpretation का मतलब है कि ऐसे के ऐसे जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है और उसको वही उसी तरीके से अप्लाई करना है. A rigid interpretation. Literal का मतलब है जैसा लिखा है वैसा ही. Liberal means in the interest of justice. In liberal, we need to see the purpose of that law, the purpose of that act. Whether it defeats the ends of justice. अगर आप hyper technical view लोगे, अगर उसको जो लिखा है वही पढ़ोगे, तो अगर उससे interest of justice defeat हो रहे हैं, तो आप you cannot adopt the literal interpretation, because procedure is the handmaid of justice, and no procedural law can be used or can be allowed to defeat the ends of justice. Right? So the liberal interpretation can be adopted in the interest of justice. Now, if there is no ambiguity, then the literal interpretation will apply,
अगर कोई एम्बिगिटी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है और उससे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में डिफीट नहीं हो रही है, if there is no ambiguity, then the literal interpretation will apply and the terms of the provisions etc. shall be applicable as it is. But in case of any ambiguity, liberal interpretation would apply. This is also one of the aspects of the interpretation of the CPC. If there is no ambiguity, if the provision is crystal clear on some point of law, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, in that case, literal interpretation will be applicable. But if there is any ambiguity, if the provision is not clear, so in that case, liberal interpretation would apply. Liberal interpretation. But in the interest of justice, if it is going to defeat the ends of justice, the literal interpretation, so in that case, the liberal interpretation will be applicable. मतलब जो जैसा लिखा है, as it is उसको नहीं पढ़ेंगे, hyper-technical view नहीं लेंगे. In the liberal interpretation, most important is the purposive interpretation. Purposive interpretation सबसे important है liberal interpretation में. As per the rule of purposive interpretation, it has to be examined as to what is the purpose of the provision and what is the purpose of that law in question. In liberal interpretation के अंदर purposive interpretation सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है कि purpose क्या है उस provision का, जिस provision को हम interpret कर रहे हैं, उस section का, उस rule का, उस order का, what is the purpose of that provision. And then we also see the purpose of law in question. The law in question, जिस question जिस कानून के बारे में, जिस law के बारे में बात हो रही है, जिसके ऊपर dispute है सारा का सारा, उसका purpose क्या है वो भी हमें देखना है. So this is the purposive interpretation. The purposive interpretation is a part of a liberal interpretation. And in this, we'll see the purpose of that provision and we'll also see the purpose of the law in question. And the court shall adopt that interpretation which would serve that purpose to the best. And court उस interpretation को adopt करेगा जो कि उस purpose को serve करेगी to the best. कौन से purpose को? Which is the purpose of the provision and the purpose of the law in question. एक provision को आप interpret कर रहे हो, कोई dispute आपके पास आया, you are the presiding officer in the court, you are a judge in the court, और आपके पास एक question आता है, कोई matter आता है, उसमें आप देखते हो that the dispute, regarding that dispute, there is an ambiguity in the law. साफ सब कुछ नहीं लिखा हुआ है. So you will adopt the liberal interpretation that in the interest of justice, you will dispose of this case under the inherent parts of the court and by applying the various provisions given in the CPC. Purposive interpretation का मतलब है कोई अगर provision है तो उस provision का हमें purpose देखना है और उस law का that law in question उसका भी purpose देखना है and the court shall adopt that interpretation which would serve that purpose to the best. और उस interpretation को adopt करोगे जो उस purpose को सबसे ज़्यादा अच्छे से serve करेगी. That interpretation shall be adopted by the court. In case of CPC, the purpose is to serve the ends of justice. So the CPC का purpose है to serve the ends of justice. So in the interest of justice, the interpretation shall be the liberal interpretation or the purposive interpretation. In case of CPC, the purpose is to serve the ends of justice and to bring about the proper harmony in the conflict of interest between the parties, and therefore that interpretations must be adopted. We have an important note here. Wherever the CPC is prohibitive or restrictive, primarily the court should stick to that provision. But if it finds that rigid adherence may defeat the ends of justice, then the court can be flexible and read that prohibitive provision as a mere directive provision. अगर कोई prohibitive provision या कोई restrictive provision है CPC में, तो primarily सबसे पहले कोर्ट उसको as it is पढ़ता है, as it is उसकी interpretation करता है. चाहे कोई prohibitive provision है या restrictive provision है, कोई भी provision है, सबसे पहले उसकी literal interpretation करी जाती है, उसको as it is पढ़ा जाता है.
लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ हम जब जाते हैं जब या तो उस प्रोविजन में कोई एम्बिगिटी है, वो प्रोविजन क्लियर नहीं है, या फिर उस प्रोविजन की वजह से एंड्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिफीट हो रहा है। बिकॉज द वेरी पर्पज और द मेन पर्पज ऑफ सीपीसी इज टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। अन्याय ना हो और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को फर्दर करना सीपीसी का मेन पर्पज है। और अगर किसी प्रोविजन की वजह से इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिफीट होते हैं और अगर वो प्रोहिबिटिव प्रोविजन है या फिर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है, तो उस रिस्ट्रिक्टिव या प्रोहिबिटिव प्रोविजन को मेयर डायरेक्टिव प्रोविजन भी पढ़ा जा सकता है। उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट मेयर डायरेक्टिव प्रोविजन की तरह कर सकता है, बिकॉज द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन, द कोर्ट हैज द पावर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरल इंटरप्रिटेशन सबसे पहले की जाती है, एज इट इज किसी भी प्रोविजन को पहले कोर्ट पढ़ता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन दो केसेस में हम लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट, जब वो प्रोविजन उस प्रोविजन में कुछ एम्बिगिटी है, वो क्लियर नहीं है, देयर इज अ शैडो ऑफ डाउट इन दैट प्रोविजन एंड इट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर, सो इन दैट केस वी डू द लिबरल इंटरप्रिटेशन। सेकंड, व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इज डिफीटेड बाय दैट प्रोविजन, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिफीट उससे हो रहा है, अगर उससे अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है कि उसको उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके, उसको एज इट इज ना पढ़ के उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करी जाए। इन द एंड्स ऑफ जस्टिस, टू फर्दर द एंड्स ऑफ जस्टिस, उसको कोर्ट पढ़ता है, राइट। सो here we have come to the end of this class and I believe कि CPC का आपको एक आइडिया हो गया है that how CPC works, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करी जाती है, लिटरल इंटरप्रिटेशन हम कब करते हैं, लिबरल इंटरप्रिटेशन हम कब करते हैं, प्रोसीजरल लॉ क्या है, सब्सटैंटिव लॉ क्या है, all these basic things are crystal clear in your mind now, right? Thank you so much for watching.